Yeah, sir, your co-host. Yes, yes. Thank you, Amol. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome Dr. Swati Bhise ma'am to this afternoon session. She will deliver a talk till 4:15. सवा 4 बजे तक की मैडम लेक्चर लेंगे. उसके बाद में 15 मिनट का हमारा ब्रेक रहेगा एंड आफ्टर दैट वैलिडिटरी सेशन विल बी देयर. So again, I welcome you, ma'am, to this afternoon session of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University. This is the last day of this UGC NEP orientation and sensitization course. And this is the 16th program which has been successfully conducted by Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. So I'm really thankful that you have spared your valuable time in this NEP orientation and sensitization. Dr. Swati ma'am is from Tolani College of Commerce, Andheri, and she has a work experience of 14 years. So again, I welcome, and I would now hand over the session to you. And all the participants are muted, ma'am. If they want to ask a question, they will raise the hand and you can unmute them. Okay, sir. I am highly honored, sir, for the introduction and calling me for this workshop. I really thank you for the invitation. And I just wanted to ask you, you said that yeah, it will be till 4:15, right? Not 5:30. Hello? Yes, ma'am. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. So, shall we start or shall we wait for the participants to join? No, ma'am. We No. can start by the time being participant will join. You can start. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Already 64, 65 participants are there. You can continue. Okay, sir. I'll share my PPT. Just a second. Give me. Is my PPT visible to you all? Yes, ma'am. I'll put it on a full screen mode. It is not in full screen. You can continue, ma'am. No issue. But it is very much visible in half screen. Yeah. Now it is full screen. Yes, sir. So, my topic is empowering India's future skill development strategies under NEP 2020. As the workshop is going on at NEP sensitization, orientation and sensitization of NEP 2020, the last topic is skill development. So under this, I will be talking about the skill development and what are the strategies, what are the techniques that we can use to develop various skills of students. So here is these are the content of my presentation. First, I'll introduce you to the topic, and then we will talk about a bit about NEP 2020's approach to skill development, and then we will discuss what are the skills, what is the importance of skill. Am I audible, everyone? Madam, participants are muted, madam. Okay, sir. Okay. Okay. So they can share their understanding In the through... chat box, you can check it in the chat box. Okay, chat box. Okay. So the next is types of skills and how do we learn skills, and then some activities I will be talking about to
which activities we can, develop skills of students. And then there are technological, some technology can be used to develop the skills of the students. So how it can be utilized, leveraged to develop skill development in the skill development of the students. So that we'll discuss and then we will conclude. So first of all, I'd like to talk about the NEP 2020, and it aims to develop students holistically. And what does that mean? Holistically means here we are looking at the flexibility, we are looking at the skills, okay, that we are going to, develop in the students. And then there is a multidisciplinary approach in an education system, because there are a lot of disciplines, if you'll see, and there is no, they intersect. Still we, uh, say that no, it is not important, that subject is not important. If I'm teaching maths, I say English is not important. So this is not the right approach. So we have to, develop in the students that all subjects are important in their life. And that's how we can, develop multidisciplinary approach to the education. And then there is a strong emphasis on vocational training and skill development. So that's what we will see, because here what can be seen that the students lack. We teach a lot of students, we, encourage to focus on subjects, but the vocational training, they lack practical approach. We need to, inculcate in students. So that's what NEP 2020 aims at. So I have already talked about this, and then the key objectives are equipping the students with 21st century skills. So what are the 21st century skills? If you'll see that there is a lot of the use of technology is happening, and the technology is being used in all the fields, all the disciplines. So not only the technology, but lot of other skill due to the globalization and all that, we need to, make student ready for, the flexible, adaptable conditions. So the conditioning, right conditioning we have to do, and then we can encourage them to, be confident and, grow in their professional life. Then there is an integration. So if you'll see, the next objective is to integration of vocational education into mainstream education. So vocational training is very much required, and that's what we need to aim at. We have to include that in mainstream education, that where it is lacking. Then building a practical approach alongside academic learning, then focus on lifelong learning. That's the agenda, lifelong learning, because we have that assumption that learning happens only in school, but that's not the right approach. So what I think is, life is an opportunity to learn and, grow. So it should happen continuously, and we need to reskill ourselves. What does that mean? Skilling and reskilling. So there are some skills we will be talking about that, and in the further PP slides. So it should happen continuously. So that's what NEP 2020 aims at. Then we will be talking about the NEP 2020's approach to skill development. So integration of vocational education starting from sixth standard onwards, the exposure on hands-on and practical experience through internships and all, other apprenticeship. Then multiple entry and exit points. So you all are aware that now, due to this NEP 2020, there are multiple entry points and exit options are available. So there is a flexibility that has brought into the education system through the NEP 2020.
Then the national skill qualification framework that aligns the vocational program with industry standards, because now if you'll see, students are not industry ready because throughout, if you'll see, in till 2020, they scholars have found out that their students lack uh, various skills, not a single, like you, if there is no such thing that only they lack in particular skill, but they lack in many skills, because the practical knowledge is not given, it is bookish knowledge. So we need to make our students industry ready. Emphasis on digital literacy, so promoting IT. It has happened earlier, but the introduction of AI has new, add on to it, and then so we need to learn about that too. So, and we need to make our students ready for for their future. So that's what it aims at. Now we'll be talking about what is a skill. So I want my participants to, take part into the discussion. It will not be only lecturing style that I will be, adopting. So my method, I want my participants to speak. So if you can unmute yourself and speak, I am asking some question. I'm going to ask you some questions, so you can raise your hand. I will unmute you. So there should be interaction continuously happening between us. Then only we can, proceed. We can go ahead. So what do you think? What is skill? May I know? What do you think? What is a skill? What do you mean by skill? You can raise your hands. I will unmute yourself. Am I audible to all? I feel like I'm talking to a wall. Hello. Would like to answer? What is skill? It's a technique. What technique? Someone said 107 said that it's a technique. Skills are the capabilities. Skills are one's capabilities. Yeah, okay. The abilities, okay, of doing something. Talent, okay. Expertise, knowledge. Yeah, good. So skills are the abilities to do something effectively, efficiently, and that's what we call a skill. So here, skill is anything that you do, you can do perfectly, or you can say you can do uh, very well. So that's what a skill means. And if you will see, there are broadly categorized into two, skills are categorized into two types: hard skills and soft skills. So hard skills, what is the difference between hard skill and soft skill? If you look at hard skills are technical abilities that you learn through someone. So these are teachable skills. We can say these are teachable skills. Hard skills are often acquired through formal education. So we are teaching our students different subjects like computer skills, mathematical skills. So these are hard skills. Even language skills. Okay, language. We are teaching language to the students. So they are all hard skills. So they can be gained through formal education. So these are teachable skills. So they are transferable skills. We can say transferable, okay, tangible skills. And soft skills, on the other hand, they are not teachable skills. They are
intangible skills, they are interpersonal skills. Okay, so we learn it through observation. We have to learn it by ourselves. No one can teach soft skills. So that's the difference. So the studies found out that the soft skills are, very important in whichever field you are in. And also it is also found that students lack in soft skills. Mostly they lack in soft skills. So what can be done to improve the skills? Life skills. Okay, so soft skills are also life skills, we can say. So these are not transferable skills. So in this case, how we can, develop skills in the students? Okay, till now whatever we have done, it's like teaching hard skills. So we also have to, inculcate soft skills. We have to, improve, develop soft skills in our students. So can it be done in the subjects like history, geography? Yes. What do you say? Can it be done in the subjects like mathematics, science? Am I audible? Cooking is, someone is asking me, cooking is a hard skill or soft skill? It is a hard skill. Cooking is a hard skill. So what was my question? I was asking you, can it be taught? Soft skills can be, whether it can be taught to the subjects like history, geography, mathematics, or whichever subjects you teach to your students. May I know which subject do you teach? I hope you all are teachers here, and you must be from different backgrounds. You must be teaching different subjects. Okay, computer science. So can this in the subject computer science, can we teach soft skills? Zoology, yeah. Okay, database management system. Okay, hospitality and tourism management. Okay, so different subjects you teach to your students. So what is your say over it? Whether we can teach soft skills to our students through these subjects? Soft skills are life skills, social skills, history, botany, sociology. So soft skills are interpersonal skills, communication skills, yes, team management. So we will be talking about that. So you are from, I got to know that you are from different backgrounds. You teach different subjects. So if we are going to teach, you know, these subjects, if you are going to, if you want to develop soft skills through, your subject, what can be done? What are the activities, what we can do to enhance the skills of the students along with their formal, hard skills? Along with their hard skills, we can also improve their soft skills. It can be done through different subjects. So we'll see next slide. Is my PPT visible to you all? Hello? PPT is visible? I have to go back. Okay, importance of skills. We will first discuss the importance of skills, and then we will be talking about different skills. So why skills are important? If you look at the current scenario, as I said that there are a lot of studies done on the employability of the students. So they found out that
they lack the studies, or the scholars, those who have done the studies, they found out that they lack soft skills, or the whichever skills, hard skills and soft skills, along with, you know, their hard skills, they lack in soft skills too. So if you look at the current employability, the productivity, and, you know, in each field, you know, there are a lot of problems. And you, if you'll put them into the problematic situation, they are not able to, you know, come out of the problems. And where you found that students, you know, our students, are even the, you know, people, those who are working, they failed. So the it requires, you know, why skills are required for the employability, to get into the job first thing, and then after getting a job, you need to have certain skills, so you can produce well, you can solve problems, you can grow your personal professional growth, and also economic growth. And then if you look at the digitalization and automation and AI, with the introduction of AI, the workplace became easier. And with the automation, you we see that lot of people, okay, are jobless. So how we can tackle those situations? Through improving our skills. So yes, improving skills uh, is important in this techno savvy world. The digitalization and automation had changed the entire workforce, you can say, workplace, all the workplaces. And due to that, you know, people are unemployed. And to tackle this question, we need to improve skills. In and the next point, if you see the global trends, globalization, I hope you all are aware of. Due to the globalization, what has happened, people came together. It became a small village. The entire globe became a small village, because there is a connectivity and communication that is happening. People migrate, and due to that, there is cross cultural communication is happening. And in that situation, when there is a cross cultural communication happening, suppose there is a multinational company in Mumbai, and our students are, you know, suppose they got a job there. So how to, you know, uh, how to work in that particular workplace, where, when it is a multinational company, because people from different, you know, cultures, from different places come together and work there. So they face lot of problems when people are put together under one roof. You know, there are a lot of problems we face, even in one family. You know, there are a lot of problems. So when people come together from different backgrounds, they face a lot of issues. So we need to improve their, maybe you can say, life skills, interpersonal skills. And that's why, you know, skills, you know, improving skill is very important. Next is adaptability. Yeah, adaptability is there, but still there are some rigidness that we see. And it is a barrier, rigidness, okay, or you can say it is a psychological barrier that stops us to adapt or maybe mingle with people. And due to this, we have to, you know, improve maybe soft skills in the students. Then the next is resilience and crisis management. Resilience is also very important skills in the in all human beings, and we need to, you know, improve. And that studies shows that the resilience, okay, is, you know, developed. Different types of resiliences are there. And then there are different sorry, developed differently.
Then there is a crisis management. Crisis, there are a lot of problems, issues we face, and we have to manage we have to manage what? Resources, people, resources. We have to manage people in such crisis. So when we are doing so, we have to have good management skills. So that's why, skills, these skills are important. Then there is a global competitiveness, innovations, health and wellness, then sustainability and green skills, the gig economy and freelancing. So there are a lot of these things that are introduced to sustain. If you see, you need to improve yourself. We know, we are aware of the evolution theory, the survival of fittest. If you want to survive, you have to continuously improve yourself, and that's what the studies also shows. Okay, that you, if you're not fit, then the automation. One example is of automation. Due to automation, many people have lost jobs. There are lots of movies that they focus particularly on this issue, automation, and how people lost their jobs. And it is the present scenario that we all are facing. So how we can uh, tackle this situation? Through improving the skills of the students. Then we will be talking about, next we will move on to the next slide, and we will be talking about the types of skills. As I have already told you, that hard skills are transferable skills, they are teachable skills. We can learn it from someone, we can teach, we can learn it from someone, but soft skills are not. So what are hard skills? Hard skills are data analysis, cognitive skills, mathematical skills, computer skills, logical reasoning, data interpretation, research skills, technical skills, management skills, communication skills. And soft skills are social skills or life skills, interpersonal skills, leadership skills, networking, critical thinking, decision making, problem solving, management skills, communication skills, creative writing, creative thinking. So these are the uh, soft skills and hard skills. Now, if you see, there are some skills, they are on both sides, like management skill and communication skill. So, what is the difference between when when it is placed in the hard skill, and when the particular skill is placed in soft skill? And uh, one thing that you need to understand, that there are no watertight compartments you can put them into, because they intersect lot of times. Okay, so for one skill you need another skill. For data analysis, you need to uh, be able to communicate well, you need to understand. So for one thing you need another. For one skill you need to have another skill. So that's why you'll see that some skills are placed under both the roots: management skill, communication skill. I'll give you example of communication skill over here. Management skill and communication skill. First, we'll talk about communication skill. Communication, what is communication? Yes. Hello. Can you answer? Is my PPT visible?
Am I talking very fast? Okay. Process of exchanging ideas, information, opinions, emotions. Okay, good. So it is communication is an exchange of ideas. How do we do? How do we exchange? Any idea? Okay, conveying our ideas. Communication means sharing information. How do we share how do we share information? What is the way? Verbal and non-verbal, correct? So when we are saying something, okay, we are speaking, right? And others are listening. Those who are at receiving end, I am saying, I'm speaking, you all are listening. When you are writing, I am reading. So there are four skills, communication skills: listening, speaking, reading, and writing. So out of these four, there are two soft skills and two hard skills. So, two, which two? Can you answer? Which two are soft skills? I hope you must have understood till now that what are soft skills and what are hard skills. Yeah, sharing with coding, listening, coding, decoding. Okay, nice. Neelam madam, sharing with coding and listening with decoding. Okay, so listening is soft skill. Listening and what? Only listening. Only listening. So only listening is soft skill. Any answer? There are four skills: listening, speaking, reading, writing. Okay, I'll answer. So listening, yeah, listening and speaking. Yes, correct. Listening and speaking are soft skills. How? Because these two skills are not taught to you. We have learned these two skills by ourselves. When we learned listening, when we were in our mother's womb, we know that there is a story behind it. We have you might have heard the story of Abhimanyu. He he learned a technique, or he heard about. There is this story, Abhimanyu. Do you know Abhimanyu? Who is this Abhimanyu? Any idea? Yes, from Mahabharata. Who is this? Arjun. Yes, correct. Arjuna's son. He is a son of Arjuna. Yes, correct. So, Abhimanyu heard about what? Do you know the story? He heard about Chakravyuha when he was in his mother's home. Yes, Chakravyuha. So he heard about this Chakravyuha in his mother's womb. But uh, one part he heard and one part he could not, because his mother was sleeping at that time. When what he heard, that how to enter into Chakravyuha. Yeah, she was sleeping. That's why he could not listen to the next part. Okay, when the Rishi was explaining this to Arjuna, okay, he heard about Abhimanyu heard about Chakravyuha and how to enter into Chakravyuha. But the later part, when the Rishi was explaining him how to come out of the Chakravyuha. Chakravyuha is what? Chakravyuha is a battle strategy. So where when you are in front of your opponents, there are different strategies that are used when there is a battle happening. So when you are when you enter into Chakravyuha, it is difficult to come out if you don't know how to.
come out of the Chakravyuha. So he was explaining, and Abhimanyu heard it when he was in mother's womb. So what the point was, I don't want to deviate from the topic. So listening is the skill that is, that's a skill that we have learned by ourselves. Nobody taught this skill to us. Next, speaking. When we were 1 year old, maybe, okay, we started speaking. So nobody taught us. We have learned it by ourselves. I hope you all are clear. So these skills, hard skills. Now, I have put communication skills and hard skills and soft skills. Why they are soft skills? Why communication skill is a soft skill as well as hard skill? Because two skills, that listening and speaking, are soft skills, and reading and writing, I hope you all are aware that reading and writing are hard skill, because we have learned it by uh, maybe our teachers have taught you, or we are teaching to our students reading and writing, how to read and how to write. First thing that they have learned reading, and then they have acquired writing. That needs mechanical, writing is a mechanical skill. So that is learned, okay, after reading skill. So reading and writing are hard skills, listening and speaking are soft skills. Same happens when we talk about management. There are different types of management. You know, what types of managements are there? Any idea? Stress management, time management, you must have heard. Stress management. Have you heard about stress management? Time management, stress management. Hmm? Task management, event management. So what are these? Soft skills or hard skills? Can you answer? Time management is a hard skill or a soft skill? Stress management? Stress management? Soft skill. Okay. Then next is task management. Task management. Okay, event management, task management, hard skill. Okay, so it requires soft skills, some soft skills also. Yeah, correct. So task management, event management, okay, they are hard skills, okay, but they require some soft skills. So that's why I said that they intersect. For one skill, you need another skill. Uh, Another skill we will discuss, there is leadership skill or interpersonal skill. So when you are a leader, you need to be a good communicator. You need to have good communication skills. You need to have good social skills. You need to have good critical thinking, decision making, okay, and management skills. So you need to, for one skill, you need another skill. So they're not separate. You can't say that there is no connection between the skills. Here you can see over here, cognitive skill, critical thinking is also included in cognitive skill, understanding, okay, how we understand the world around us, logical reasoning. So they intersect. I hope you're understanding what I'm saying. Are you with me? So you cannot, separate them. Though we have two types, one for one skill, you need another skill, and they always intersect. Abstract answering is a good communication skill. You're asking me, are you asking me whole number? What is it? 36. Was it a question?
Abstract answering. Answering, yeah, answering is always, it's a communication skill. How you answer, you know, the way you answer, there are different ways, there are the different strategies. Was it a question? 36 number? Okay, fine. We'll go ahead with this. Tell me now, you must have understood that we need to learn skills. We need to reskill. Reskill. Reskilling happens, okay, when you learn and unlearn. Learn and unlearn. So we have talked about soft skills and hard skills. You must have heard about this. How do we learn? Hmm? How do we learn? You know Benjamin Franklin, he said that, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So how we involve ourselves and involve our student, how we can do it? Involvement, how we can involve them? Yes, any idea? Are you with me? Learning by doing, correct. Learning by doing. So here we need to understand that people learn by doing. Okay, it is one type of learning. Doing is one type of learning, experiential learning, we can say. So that's what we need to promote. Do you know what is this? What is happening in this picture? What is happening in this picture? Okay, teaching a lipstick. Okay, to put lipstick. Okay. Okay, one a child. There is one child who is, what is, yeah, correct. Copying. Okay, imitation. The child is imitating a mother. So imitation or mimesis is happening. So representation, replication, okay, and that's what happened, okay. When you learn something, you replicate, or you represent the same thing. It's like a mirror, okay. So you must have heard that children pick up whatever you do in front of them, and that's how we have learned speaking. We have learned speaking by imitating. We have imitated. So that's the learning technique. So we learn through imitating, and there are different other ways of learning. You must know that we have, uh, you know, five senses, sensory organs, and we absorb, we learn through all those five sensory organs. So there is observation. Basically, the observation happens, okay, from all the five senses.
but basically when you see and hear, okay, you perceive, okay, whatever in front of you, you see and hear, you observe and you grasp something. Then the next thing that you can see is experience. When you experience, taste and smell, so that is your observing something, okay, in front of you by tasting it or smelling it. And the third one, that is understanding and responding, feeling and reflecting. So when you feel, that is your you know response to whatever you observe. And so this is what we have to keep in mind when we are teaching our students. As a teacher, we need to always ask our students to be open. Open means they need to grasp whatever they are doing, whatever they are learning through all five sensory organs. I tell my students that they have to keep themselves open all the time. They have to observe. So there is a process, like when you observe, there is you know you're absorbing something in yourself, maybe at a conscious or a subconscious level, subconscious, or you can say unconscious, even unconscious level. So that is happening continuously. So when they will keep themselves open, the learning process happens fast. I hope you're with me. So how do we learn? By observation, by experience, understanding, and responding to whatever we have, whatever we are observing, or whatever we are, getting in. So different styles are there. Some people are good when they just see and learn things. Some people are, you know, good at auditory skills. Maybe they learn, they listen something and they start doing it. You know, there are some students or there are some people, they learn by just looking at the things. They're quick learners, visual learners. They're called visual learners, oral learners, and verbal learners. By just you, if you tell someone something, they learn. Like recipes, I have learned most of the recipes by just verbal uh, linguistic skill. Someone told me do this, that, and I have learned and I have prepared that food. There are some people, like they are very good at listening. They learn through just listening. Then next is visual listening, by seeing the things, okay, how people do. You learn, or people, okay, some students, they are good at, some people are good at visual learning, and some are they have to do it, otherwise they can't learn anything. Because here what happens, when you do, you practice. When you when you do, you practice. Kinesthetic means you're physically involved, you're doing it, and then you're learning. For example, the experiment the students do in the laboratory, when they write, when you ask them, like scribbling, someone is scribbling on the uh, slide. So children, okay, first scribble, they draw slanting line, slipping line, curves, and they learn what? Words. They learn sentences, writing sentences.
So this is a practice, or maybe doing and learning. Dance, how it can be learned. Some people, when they will do that posture position, then only that step, okay, they do, they learn. Some people, by just watching, they, can adopt it. They're very quick learners. Watching, those who are good at visual, learning, they are quick learners. So some students are visual learners, some students are physical learners. So that's what we need to understand. So we have to accommodate all the students, and we have to, cater different types of students and improve their skills. So we need to understand what they're good at. Accordingly, we can, you know improve their skills. So we need to we need to connect ourselves with the students first. So that's what you know uh, you have to do, to understand about the students and what they're good at, and accordingly we can, improve their skills. Some are social learners. They they socialize and they learn things. Some are logical learners. They need logic. The child prefers using reason, logic, okay, and patterns. So they learn. But I can say, like, if you all are teaching higher classes, then they are about 13. The logical reasoning develop at the age of 13. It starts improving from 13 age onwards. So if you are teaching students below age 13, then their logical reasoning has not, it develops after 13. So if you are teaching students below 13, you have to use maybe physical learning, kinesthetic learning, visual, oral, linguistic, okay, or even social can be used. Then there is a solitary learning. Solitary here is one example that I would like to give is solitary. Some are very, introvert kind of. They don't socialize. So how they learn? They learn by reading. Supriya, someone is scribbling on screen. Can you stop doing it? So they learn by doing things alone. When they are alone, they don't want to mingle up with others, and they do it, they learn it, the particular skills, alone. For example, I give my own example. I like dancing, but I can't dance when I am in, social situation. So how I learn that skill? uh, I when no one is there at home, I dance. You must have heard about people, like, they, you must have experienced this. Some of us, we like to sing. We are bathroom singers. But when we are asked to do it, when there are maybe social situations, we are not able to do that. So they learn at their pace. So these are the differences, okay, of learning. These are the differences in learning styles, learning maybe uh, types, and we need to understand, and accordingly we need to change our styles of teaching. I hope you all are clear. Shall I move on to the next slide? Any doubt? If you have any doubt, you may ask.
Are you with me? Next, as I have already talked about listening, speaking, reading, and writing. So you can use Supriya Machindra. Some Supriya is scribbling. Please stop doing it. Okay, we have talked about that there are four skills: listening, speaking, reading, and writing. So you can make use of all the four skills to teach different subjects. So we can ask students, okay, you can maybe, if you're teaching history, so you can tell students to maybe listen to the stories, storytelling you can use to teach history. You can use this technique to teach geography and many other subjects. Okay, zoology. So that helps, you know, in learning that particular subject or grasping that particular subject well. Speaking. So you're asking them to participate, involve, speak. They some of students, they learn by speaking, because speaking is you are involving them in the learning process. Then the reading and then writing. So these are listening. Listening is separate. Okay, speaking, reading, and writing. Reading when it is happening aloud, that is, you're taking part. Writing also you're taking part in. But listening, that is happening on an individual level, so that is separate thing. I hope you're understanding what I'm saying. Listening is you are involved in listening, you're involved, but when you respond, that is, you know uh, active involvement. You understood? Listening is happening at your pace, but when you are, responding to whatever you are listening, that is your active involvement. Right now, not all of you are answering, but you're listening it continuously. Whatever I'm saying, you're listening. You're involved only in listening, but when you respond, it is your active involvement. You speak, okay, you respond, that is another thing. Reading, okay, same happens with reading, but when you are reading aloud, that is, active participation. Listening, active participation when you are responding to whatever you are listening. Same happens when reading. Writing is your when you write, you're, responding. When you're writing, you're responding to something, so that is active. I hope you are understanding what I'm saying. There are active and passive things that are simultaneously happening. Listening, when you are listening at your own pace, that is passive. When you are responding, it is active. Speaking, it is always active. When you are speaking, in speaking mode, you are speaking, it is active mode. Writing is also active, okay, but reading is when you are doing at your own pace, that is passive. And when we are talking about learning styles. So reading, when you're reading loudly, then it is active. I hope you all are clear. Now we will do one activity.
You have to listen to this story, and at the end I will be asking some question. We will discuss about the story. Okay, it's not working. Hold on, I'll show you on YouTube directly. Is it audible? That the video that I'm showing, is that video audible? No. Okay. What Men Live By and Other Tales, and Giving the Space, translated by L and A Maud. 3 questions. Translated by L and A Maud. LibriVox. Is the video audible? Yes, ma'am. Okay. It's audible. Yeah. Recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 3 questions by Leo Tolstoy. Information or to volunteer, please visit LibriVox.org. 3 questions by Leo Tolstoy.
from the collection What Men Live By and Other Tales, translated by L. and A. Maud. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. And learned men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. Only thus, said they, could everything be done at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that, not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on, and then do what was most needful. Others again said that, however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men, who would help him to fix the proper time for everything. But then again others said that there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counsellors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. To the third question, as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. All the answers being different, the king agreed with none of them, and gave the reward to none. But still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit, widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, and leaving his bodyguard behind, went on alone. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him, and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. The king went up to him and said, "I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention?" The hermit listened to the king, but answered nothing. He just spat on his hands and recommenced digging. "You're tired," said the king. "Let me take the spade and work a while for you." "Thanks," said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while, and let me work for a bit."
But the king did not give him the spade, and continued to dig. 1 hour passed, and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so, and I will return home." "Here comes someone running," said the hermit. "Let us see who it is." The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as best as he could, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood, and washed and rebandaged the wound. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. Meanwhile the sun had set, and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired with his walk and with the work that he'd done, that he crouched down on the threshold and also fell asleep, so soundly that he slept all through the short summer night. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was, or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. "I do not know you, and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed, and you didn't return, so I came out from my ambush to find you, and I came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave, and will bid my sons to do the same. Forgive me." The king was very glad to have made peace with his enemy so easily, and to have gained him for a friend, and he not only forgave him, but said he would send his servants and his own physician to attend him, and promised to restore his property. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he'd put. The hermit was outside, on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. "How answered? What do you mean?" said the king. "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday, May I know? I hope you all have heard the story. Am I audible? Okay. So what is what is his answer? You know, yes, the hermit gave one hint to the king. So
Could you guess what is his answer to the questions? What were the questions, by the way? Can you type or can you tell me? Can speak? I'll unmute you. What were the questions? What is the right time for action? There were 3 questions, right? Yeah. What is the most important thing? Yeah. Yeah. So these are the 3 questions. What is the right time to begin anything? Who are the most important people to work with? What is the most important thing to do? So yeah, what is the answer? What answer he might have given? The hermit. He gave a hint. Any answer? You can guess. What is the most important thing to do? Who are the right people? Yes. And what is the most important work? Yeah, here is the answer. Someone gave answer. Nice. Very good. Rameshwar Jagdale. Yeah. The most important thing, people are the people, those right in front of you or in your life. The important thing is to do whatever is there in your present. And next is, yeah, do good things, kindness. Very good. So you can use such kind of, uh, activities, and you can improve, or you can develop curiosity in the students. You can also develop their critical thinking. So the storytelling is a very good activity, and we can use it for different subjects, not only for English but various subjects, and we can develop various skills through such kind of activity. I just would like to remind you that when you are listening, you were actively involved in it. So you might have noted down few things, or you were listening actively. Okay, the listening skill that can be improved, okay, by doing such activities. We can ask our students you know some questions at the end or in between the whatever story that is we are telling our students. So storytelling, or you can make use of such audio stories that are available, or you can show them if movies are available. There are documentaries are there, so you can make use of those things, and you can teach that particular subject. Even geography can be taught. Geography, history, there are documentaries that are made, so you can use those things, and you can teach uh, your students the concept, as well as you can improve their skills, various skills. You can improve their critical thinking, you can improve their listening, communication skills. So next is problem solving skill, decision making skill. So these skills can be improved through such activities. Listening activity, you can give them listening activity, or uh, the next activity that I'm going to do is speaking activity. Now what we will be doing, we will be watching. I'll show you this picture for 2 minutes. There are 3 pictures you have to see, and you have to tell me
what you have observed in these three pictures. I'll tell you what simultaneously while doing these activities, we'll also discuss what we are improving. Okay, while doing this activity, what skills we can improve our improve and what things we can teach our students. Observe it carefully for 2 minutes and note down if you want whatever your observations. Shall I move on to the next slide? And here is the third one. I hope you are done with your observation. The three pictures I have shown you. So what you have to do is you have to tell me what you have understood. What are your observations and what you have understood through these pictures. You can type in the chat box or you can ask me to unmute yourself. I'll unmute instantly. Kabristan. Okay, okay. Symmetry, correct. Okay. But what you have observed, okay, what are your observations? Yeah, it's correct. Yeah, it is symmetry. It is crematorium, graveyard. Yeah, at different points of day. Okay, very good answer, Bhumika madam. Anything else that you have observed? Morning, dusk, night. Okay. Okay. Three different perspectives, three different times. Okay, very nice observation. First pick is green flowers and though graveyard but lively. Information about the person written. Very good observation. Yeah, you have to see each and everything in the picture. Feelings are different. Correct. Three different types. Yeah, correct. Yeah, three pictures, three different times. Second, less green and a bit dull. Okay, good observation. Yeah. Anything else? Have flowers, few have bushes. Okay, few have bushes. Third is grave like haunted, gloomy. Okay, correct. But why? Can you guess why it is looking gloomy? Third is so grave. Number 19. He said number 19 is saying third is so grave like haunted, gloomy. Why you felt like that? Nobody visits there. Why you felt like that? Can you answer? Someone also said that the first picture, it is, though it is graveyard, it is, okay, no greenery, night time of the day. It is night time, not
because of darkness and the lack of visible greenery due to the color scheme. Correct, Seema madam? Too dark. Yeah, correct. So yeah, these are correct observations. Yeah, here you if you see, it's a play of light and darkness. Even the light aspect matters. Yeah, that's what we were discussing about. So you can, you know, ask, you can use such pictures and ask various, pose various question to them, and you will see that students, you know, will come up with various ideas. Brainstorming you can do. We are brainstorming here. I asked you why there is a, why, what difference you found out, and why you felt like that. So you can pose questions, so they will, you know, come up with their answers. So such activities can be conducted. Yeah, so these are various observation you can see here. The first picture you will see, it's very light, clear, uh, and you know, it is the daytime of the very, maybe you can say it is, there is no shadow over here. What time of the day it should, could be? Yes, answer. Yeah, correct, 12 o'clock. And there is clear light of the day, and you can see there are various inscriptions over the tombstones. There are the tombstones, some are black, some are, you know, you know, there is carving with golden, some silver. There are some decorative pieces. There are some, you know, you can see there is this cross on some graveyards. Some graveyards are so showing something different. So there is, these are the differences that you can see. So what you can say about these differences? What you understood through this? Yeah, and you understood my question. I'm asking that in the first picture, it's very clear light, you know, and different, you know, tombstones are there, different inscriptions are written over there. So what you can come out with, what you can say, it is very serene place. It is very एकदम शांत है यहाँ पे, बट लाइवली, किसी ने बोला कि इट इज लुकिंग वेरी लाइवली. Why it is looking lively? Because of the greenery, because of the flowers, and you know, the the liveliness uh, is there. Okay, in the differences also, perceptions are different of different people. Okay, Vinita madam, correct. But overall it is same for the three pictures. When I asked you the question, what are what you found out, what are the differences? Okay, and you will, yeah, you can come out with different perspectives later on. You can ask various questions, and you will get different answers. Yeah, it is first one, that is nearer to human settlement. Correct observation, Hema madam. So this is how, you know, you can make use of, you know, picture readings are there. So you can make them speak. So speaking skill, communication skills can be developed along with their thinking, critical thinking. When I pose this question, why you felt it is lively. Okay, so it's up to you how you are using this. Okay, activities, or maybe
whatever you do in your class. Okay, what skills you are developing, what skills you are aiming at. Okay, mostly critical thinking we have to develop at their age, and the focus is on researching skills. So you can, pose questions and you can develop their critical thinking, data interpretation. There was a lot of data over here. You have observed three pictures, and in three pictures lot of data is there, and you have analyzed it too. So you can improve their communication skills, you can improve their critical thinking, data interpretation, you can improve their research skill, data analysis. Okay, so these skills can be developed to whatever subjects you are teaching. Not necessary that it should be English, or it should be, or anything that uh, in those uh, showing pictures is uh, easy and feasible. Not necessary. You can show them any picture, okay, related to your subject, and you can improve such skills in your students. So you need to be little creative doing so. The next activity, again, I I would like to pose you a few questions on the same this picture. Observe this picture and let me know what your observations are. What the picture is about? Can you guess which place it is? Kashi. Yes, Vinita madam. It is Kashi. Yes. Which ghat can you tell me? Seema madam. Have you visited? Okay, Kashi, Ganga Ghat, Manikarnika Ghat. Correct. It is Manikarnika Ghat. It is Manikarnika Ghat. Why? You said Ghat. It is Ghat. But why this Ghat? Manikarnika. JKM. You answered it is Manikarnika Ghat. Ganga Ghat. Okay. Aarti madam. Famous for two things. What two things? What you can see? Where the bodies are burnt. Yes, correct. Where the bodies are burnt. Here you can see there are dead bodies. They are burning the dead bodies. There is some smoke. Mokshagat. Yeah, correct. There is some smoke. That's why you can identify the the detailing in the pictures, and you can pose questions, and you can improve uh, various skills in your students. Next, now this, it too is a ghat, but what is happening in this picture? In the previous picture, there is a smoke, and people are there. There are a lot of logs, you know, kept over there, and the dead bodies are burnt. Okay, there is one dead body burning over there. You can see over here. Yeah? And this picture, there is also burning here, but what type of burning? Okay, worship. Ganga Aarti is happening, and people are attending Ganga Aarti. So here, you know, you can, show pictures when they're contrast and comparing and contrasting. Okay, so you can use, यस प्राचीन धार्मिक स्थल है, यहाँ पे गंगा आरती चल रही है, एक में गंगा आरती है, एक में यू कैन सी दैट देयर इज the dead bodies are burning. So two things are happening, and you can pose questions so they can find out the similarities and differences in the data that you are giving to them. Next is this. Can you tell me what is happening in this picture? The short activities. Okay, plane crash, correct. Aeroplane crash. Okay, plane crash.
प्लेन क्रैश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्सीडेंट, क्यों, क्या हुआ होगा, कुछ आइडिया है? कैन यू टेल मी what might have happened? क्यों हुआ होगा प्लेन क्रैश? It burnt, yeah, but why? Fire, fire broke out. Okay, but do you think that ये crashed and burned? Engine failure and that completely burnt. Okay. Do you think that people might have, survived in this? Bomb blast हो सकता है. Okay, correct. Bad weather. Bad weather, you can say. There is some engine problem or bomb blast. You can surely say that it could be a bomb blast. Climate, bad condition. Okay. Survivor होंगे वहां पे कुछ people survive किए होंगे कुछ? What do you think? No, because it is completely burnt, right? Yes, that is the answer. It is completely burnt, and there people inside all people must have died because it is completely burnt. Okay, so you have to ask questions so they can, come up and they will learn through this. Now this one, इसमें क्या हुआ होगा? Can you tell me what is the picture about? What is happening? Bomb blast. Okay. Car crash. Is it a bomb blast or a car crash? Fire accident. Okay. Bomb blast. Okay, correct. Okay, अग्निशामक यहाँ पे है. There is car burnt. But why car burnt? There is some reason, right? You can see there are some houses behind the car. How they are looking like? Due to fire, car damaged. Okay. What you can see behind the car? पीछे कार के पीछे कुछ दिख रहा है आपको? Is it because the car was broken? Houses, but how? In what condition you can see them? How is the condition of houses? Burnt? Are they? Industrial area लग रहा है आपको? Okay, houses are also damaged. Yeah, damaged, but how? Can you say gas blast? Okay. Okay, ये riots का picture है. Riots, after riots. Okay, what happened? So you can see there is a car burnt. Okay, bomb blast you can say, and the houses are also fallen. घर जो आजू बाजू के घर है जो वो they are also fallen. So here it is completely blast. Okay, you can say bomb blast. There are some survival हो सकते हैं यहाँ पे. Missile attack in war. Okay, bomb blast is fine. मिसाइल अटैक अगर वो होता तो ये आजू बाजू के घर कुछ भी नहीं दिख रहा होता. ओके, सो मस्ट बी थोड़ा है टेररिस्ट अटैक. ओके, राइट्स का करेक्ट हो सकता है या बॉम्ब ब्लास्ट. ओके, नो सर्वाइवल नहीं हो सकता है. ओके ओके. Madam, we have 8 minutes left for our validatory session. So accordingly, you can conclude within these 8 minutes. Okay. Sorry if I am interrupting you. No issues, sir. No issues. I'll just conclude in 10 minutes. Give me 10 minutes. No issue, ma'am. No issue. 10 minutes, exactly 10 minutes. You can also listen to our validatory session also, I would request. Yes, sir. Yeah, it happened due to the bomb blast. So you can show pictures like this and you can, improve their grasping power. You can improve their, observation skills.
So there was one poem I wanted to, discuss here. So there are different, activities you can do in your class, and you can improve the research skills. Mainly research skills. We have to improve of higher in higher education. So there are a lot of ways we can do it. There was one poem from Bombay Central. It is written by Giv Patel. I wanted to discuss this. I wanted to discuss this poem, but I think there is limited time, so we have to skip this. I just wanted to tell you in short what you can do. You can ask them to read, recite this such poems, and there are a lot of things actually I wanted to discuss over here also, because the way it is written, okay, there are lot of skills that we can improve even through whatever piece we are using as an activity. Okay, so there was one more poem by Nissa Musical, Goodbye Party for Miss Pushpa TS. Okay, we'll do one of this poem. Can you read this poem? I'll read it for you, and you tell me what are your observations. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. You are you are all knowing, friends, what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness, but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling, even for no reason, but simply because she is feeling. Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Balsar or Surat. I'm not remembering now which place. Surat? Ah, yes. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. Coming back to Miss Pushpa, she's most popular lady with men also and ladies also. Whenever I ask her to do anything, she was saying, just now only I'll do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. Pushpa Miss is never saying no. Whenever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going to improve her prospect, and we are wishing her bon voyage. Now, I ask other speakers to speak, and afterwards Miss Pushpa will do summing up. So here, this poem is written by Nissa Musical. Can you tell me what you have observed? What are your observation? Grammatical mistake, correct? But uh, the writer himself is a professor of English. What could be the reason of doing so? Can you answer me this question? There are a lot of mistakes. I do agree, and yeah, there are. So tell me, if the writer himself is a professor of English, what could be the reason of doing so? Writing in such kind of language. No, it can't be the answer. Perhaps he was too emotional. It can't be the answer. Sorry to say that, Vinita madam. Okay. Okay, teacher can ask student to correct that. But was it written with this intention that this will be taught to the students, Hema madam?
I don't want to point out your mistakes, but here there is one thing that we need to understand here is that communication. Okay, he wrote this poem with the intention that the correctness, that perfection. Okay, we are always behind perfection. Okay, so if you'll see this language, the way it is written, it is not correct, it is not perfect, but still it carries the essence. Do you agree? It is called Babu English. It is pidgin. We in English linguistic it is called Babu English or pidgin. There is a way, uh, you know, there is, impact of mother tongue on English. So that's what we can see over here. So we have to tell our students that they should learn, they should come up with, ideas. So don't ask them when they are doing it first time, they don't ask them to be perfect based on phonetics. Okay, sense of feelings. Okay, good. So don't ask them to, be perfect at initial stage. They will not be. You have to correct them. You have to, they will come out. At least, some responses you will get from your students. So that's what the intention behind conducting this. Okay, next we will be doing, there is this passage. I wanted to do this, but since there is short time we have, we will skip this passages. There are, you can give passages to the students and you can ask them to put it, write a summary. Okay, put whatever they have understood in graphic organizers. I hope you all know what graphic organizers are. Graphic organizers are tables, flow charts, tree diagrams, then there is mind map. Okay, so you can ask them to put it, so they will learn. There is this note taking and note making that helps them doing so these activities can be done in the class. You can ask them to read and put whatever they have understood in maybe a graphic organizer. Then there is a, as I said, research skills are very important, and we have to, as the aim of NEP 2020 is to improve research skill in the students. So it is introduced in various, programs at the, I think third year in sixth or seventh, fourth semester, I think, not fourth. In some colleges, in some institute, they have introduced it in the fourth semester, sixth semester, eighth semester, because the because of NEP, uh, with the introduction of NEP, we have introduced research projects in during their program in fourth semester, in sixth semester, in eighth semester, like that. It depends on even the institute. So where they want to keep, they will keep it maybe mostly at eighth semester or sixth semester. So we have to teach them research skill. So if you will see whatever we have done till now, okay, I was just posing questions. So you need to, improve their curiosity in the subject. First try to understand their interest. Accordingly you need to, they will come up with various ideas, they will come up with various subjects, even within your stream, within your discipline. So you have to see, and you have to, improve, develop the curiosity in the students, and you can ask them, okay, to maybe write the paper, research paper at initial stage. I think in some institute they have introduced research papers, they have introduced uh, research projects. So the proposals can be taken. You can
tell them to write a proposal like this. This is a structure of a research proposal, so they can initiate their research skill. I will move on to the next slide because I have to finish it in short time now. So I have already talked about this, that you have to develop your curiosity, interest. So how you can do it? You can pose questions. You have to support their natural interest, encourage experimentation. So allow trial and error. So people they don't expect that perfection from the students. So let them do at their level, at their pace. So they will, when you will try, then only you will learn. So I hope I wanted to share my experience. I was not knowing cooking when I got married. Like I was not knowing many dishes, but I have learned various dishes by doing experimentation. So let them experiment, trial and error. Okay, let them. If you you might have experienced this. When something is not there, we do jugad. We do jugad in Indian, houses happens. Okay, it happen in every house. So ye kya hai? So that is trial and error. You experiment with the thing. So you let them do in even academics. Develop their reading skill. Encourage them to read a lot, and you yourself have to be you know curious first. You have to be enthusiastic, and you need to look for a hook in their maybe academics or whatever in their responses they give. And you also have to do one thing, that is present information. Don't give everything to your students, let them explore. What I suggest is, don't give them ready-made material. I don't give my students ready-made material. I ask them to explore. So they will, try, they will learn by themselves. So there is this one thing that, I wanted to share how this happens. There is a process. Okay, want to know, then you can, understand. They develop the content, then they transfer it to, that skill. How a skill can be, developed through a process, through the content, through the transfer, and then it is adopted into the self. I'm doing it very fast now. So there are these skills: problem solving and decision making. There are a lot of ways. There are a lot of activities that you can take in your classrooms. Brainstorming is there. SWOT analysis. What is strength, weakness, opportunities, and threats? So you can do a SWOT analysis of various things. Then there is fishbone diagram. Fishbone diagram is given by a Japanese scholar Ishikawa. So here it is, fishbone diagram. This looks like that. Okay, what are the causes and effects? Something that happened. Okay, what causes and effects? In history class, you can use this. You can use this in science class. You can use it in biology class. In various classes you can use. Okay, then next is 360 perspectives. You always have to aim to develop 360 perspectives of the students. 360, what is it? If you look at the coin, it has two sides, but it is circular in shape. So when we are looking at a globe or maybe a coin from one side, the next side, okay, the opposite side of the coin is not visible to us. Even when you are looking at only one perspective. Now the globe, if you take the example, we are living in India. Okay, if you want to visit if you want to explore the entire earth, it is not possible, humanly possible, because we have limited resources, we have limited time. So what you can do, you have to select places, and then you have to explore that. But when you are understanding something, you have to go in depth, you have to explore it, like you have to see it from 360
degrees. So looking at only one degree will not be sufficient to understand that subject matter. So encourage them to have 360 approach, 360 perspectives, so they learn better. Then there are various activities. I wanted to do this activity, but now we will not do. Interpersonal skills. What are interpersonal skills? There are communication skills, conflict resolution, emotional intelligence, team spirit, time management, stress management, goal management, task management, and leadership skills. So these skills, emotional management, you can group them and you can see how they respond to some activity, how they, do the activity. They will develop the skill. Okay, resilience, and through the resilience and through, understanding the team they are in, they will learn doing this. Time management, give them task and give them deadlines, so they will learn time management. Stress management, there is, when you give deadlines, when you give task and deadlines, they have to manage stress also, because they have to finish within that time. So they learn, okay, those skills at their pace. You cannot teach those skills because these are soft skills. You have to give them activities, and through activities you can, develop these skills. So there are some games that you can, do in your classes. You can conduct in your classes. There are role plays. So these are the activities that you can conduct in your classrooms, and you can improve their various skills. Storytelling, communication skills, listening skill. Then there is a script writing. Script writing, here it is hard skill. Okay, there are a lot of, technical, writing technical stuff, writing, maybe whatever you are teaching, whichever subject you are teaching, you can, make it very interesting. You have to be little creative, then only, you can come with, whatever you are aiming at. Then movie screening is there. Then extempore and speeches, you can ask them to give speech. You can train them what, they have to do when they are giving speeches. Next, debates are there. You can give them topics related to your subjects, and then you can ask them to debate or discuss. You have, if you are expecting perfection, then you will not get. You have to give them, an opportunity, so they can come up, okay, with whatever they have. So mock interviews, mock meetings, interviews you can conduct, so they can learn few things. Learn what? How to present themselves in such situations. Okay. How to answer questions. Then there are projects you can, have small projects. You can, if you're teaching subject like biology, if you're teaching subjects like science, okay. Then presentations. So in all subjects, you can ask them to make presentations. You can ask them to do a research, write a research paper and present. So they will develop these skills, presentation skills. Then there are surveys, field visit, and field works. So these are also activities that you can conduct in your classrooms, depending, okay, on maybe whatever concept you are teaching to them. Okay, you can use different activities. So these were the activities. There experiments and case studies are also there. So I left out with this, I think. Experiments and case studies are also there. So you can make use of case studies. You can make them work, field work. You can ask them to do. So all of these activities you can conduct, so they will take part into the classrooms. Because you have to make it interactive, then only they will take part into your classroom. I know there are a lot of students, okay, they just, lot of us, we use
lecturing style. That will not help us, okay, improving the skills. So the focus should be on activities, and you can leverage technology in, there are lot of platforms, online platforms available. I think there was a lecture on this. There was one discussion happened on this. So you can make use of Madam, technology. Yeah, I'm done, sir. I'm concluding. Yeah. already guest has joined. Yes, sir. I'm done. I'm done. So that's it. If you have any doubt, you can ask. If you have any doubt, any question, you can ask. Participants can ask the question. I would request Swati ma'am to be here only for the valedictory session, ma'am. Yes, sir. Yes, You, sir. you I'm can here. also listen to the director sir also and also the chief guest also. Yes, sir. I am here. Yes. I'm very much here. Yes. So if there are any questions, or we can move to the valedictory session. Already our chief guest, Dr. Gajanan Sanap sir, has joined our cloud meeting. Also, the president of this valedictory function, Professor S.S. Patil sir, has joined our cloud meeting. So indeed, it is really a pleasure and honor for all of us to have Dr. Gajanan Sanap sir, Honorable Management Council member of our university, to be here in this valedictory function. Also, Dr. Swati Bhise ma'am is also here, who has just concluded her session. I would request her to stop the screen sharing so that Amol can share the valedictory screen. Yeah. Yeah. Yes. Ma'am, you can stop. Just let ma'am stop. Then after that, Amol, you can share it. Yes. Yeah. Okay. Yeah, Amol, you can share it now. Yes. All Yes. participants, open your cameras, please. सभी participants से निवेदन है कि वो अपने कैमरा ओपन करें. Yes. Just 2 minutes, sir. One. I will share. Yes. This is play the song. University song you can play, Amol. Just within a minute, we will start the valedictory session. Yes. गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे अभंगाचे ओवीचेही माय बोलीचे माहेर वाऱ्यातही मराठीचे दिवे लख घरोघर संत महंतांचे विरागी गीत आमुचे कातळाचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे
तंतु तंतु संघर्षाचा पैठणीत भिनलेला नक्षीतच पक्षी पक्षी विजयाचा मिळलेला सोन पहाट उदयाचे गीत आमुचे उजेडाचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे प्रज्ञेचा सूर्य नवा शब्द शब्द उजळून गेला समतेचा संगराचा अर्थ ढाळून गेला विराट विशाल संस्कृतीचे गीत आमुचे जीवनाचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनामनाचे गीत आमुचे जागराचे Thank you, Amol. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome today's chief guest, Professor Dr. Gajanan Sanab sir, who is basically a professor in chemistry from one of the prestigious college of our Chhatrapati Sambhajinagar, that is SB College of Science. Also, he is a honorable governor nominated management council member of our university, a person who has worked a lot for the upliftment of the students, for helping out or solving out the problem of the teachers. So indeed, it is really a pleasure and honor for all of us to conclude this NEP orientation and sensitization course through his valedictory session. So I welcome you, sir, to this NEP orientation and sensitization course. Also, I would like to welcome our president of this valedictory session, director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Honorable Professor Satish Patil, sir, who has been actively playing the role of mentor and through under his able guidance. This is the 16th NEP orientation and sensitization course we are concluding this year, and around 2600 participants have got their training. So indeed, always a mentor for us and always a valuable guidance of Professor Satish Patil sir is there. This 16th faculty induction program, which was started by the lecture of Dr. V.M. Pandari Pandey sir, who is former Vice Chancellor of our university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar. Immediately on the second day, we had Dr. Yedle Lakshman Rao, who worked in Shri Sant Swata Madi Gramin Mahavidyalaya, Pulamri. Also, we had a talk of Dr. A.R. Bharadwaj sir, who is CEO, Bejon Desi Foundation, Nasik. Then we had one of the important lecture of Dr. S.P. Kallurkar sir, former principal, AET College of Engineering, Mumbai. He delivered a talk on Indian knowledge system, Bharatiya Grand Parampara and AI. Also, we had a session of Dr. Ajit Thete sir, who is director of Center for Development of Leadership in Education. We had a lecture of Dr. Ramkrishna Bhise sir, who is working in SIES Graduate School of Technology in Navi Mumbai. Then we had
the lecture of Dr. Sunita Joshi, ma'am. She is a national co-convener of Shiksha Sanskriti Uthanyas, New Delhi, also executive council member of DAVV University, Indore. And today we had a lecture of Dr. Swati Ramakrishna Joshi, ma'am. She is working in a Tolani College of Commerce, and we regret that she couldn't give us sufficient time due to this validatory session, and we hope that in the coming days she will contribute a lot through his lecture in this Malviya Mission Teachers Training Center. So, not taking much of time, I would now request our respected Management Council member, Professor Dr. Gajanan Sanap sir, to deliver a valedictory address to all of us. Thank you, sir. National Education Policy Orientation and Sensitization Program conducted by the Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, from last 14th of October till today. Honorable Director of this institution, Professor Dr. Satish Patil, sir, convener of this program, Professor Dr. Rafe, sir, and now just we have to listen the lecture, Swati Joshi madam, all the dignitaries from the different universities, colleges. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मोस्टली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले 4 सालों से और लगभग उसके पहले कुछ डिस्कशन हम लोग करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पिछले इन 9 दिनों में आप लोगों ने भी जो लेक्चर्स सुने हैं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपके सामने लाने में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अभी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एज अ मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर काम कर रहा हूं, और विद्यापीठ विकास मंच इस फोरम में भी मैंने पहले काम किया है। तो काफी पीपल्स के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह तो हम पिछले 4 सालों से पढ़ाई करते आ रहे हैं। जब भी मैं कोई लेक्चर में जाता हूं तो मैं पूछता हूं, ये जो NEP का जो शिक्षा नीति आई है, तो क्या सभी हमने इसमें पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो इसके जो प्रिएम्बल में जो लिखा है, ये नई शिक्षा नीति लगभग अगर हम सोचे तो आफ्टर 34 इयर्स भारत में आई है। लगभग आपने देखा होगा कि 2014 में जब शासन बदला, मोदी सरकार यहाँ पर आई और शिक्षा के बारे में एक मंथन शुरू हुआ, और जो 1968 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी, जो शिक्षा में कुछ बदलाव आए थे, उसके बाद में जो सेकंड टाइम 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की दूसरी नीति इस देश में आई। लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट 34 इयर्स में जो भी शिक्षा नीति आई, वह परिपूर्ण थी क्या, इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि शायद कुछ शिक्षा नीतियों में फुल एजुकेशन की ज्यादा बात कही गई। कहीं शिक्षा नीति और बीच में जैसे 92 में कुछ बदलाव लाए गए, 2014 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। ये जो कुछ बदलाव घड़ी घड़ी आते गए,
इसमें थोड़े बहुत बदल शिक्षा में होते रहे हैं, लेकिन अभी जिस और हम बढ़ रहे हैं, जहां पर इस देश ने बताया है कि 2047 में, 2047 में जब हम 100 साल आजादी के पूर्ण करेंगे, तो भारत जागतिक महासत्ता कहने जाएगा। लेकिन ये अगर जाएगा तो किस बलबूते पर जाएगा? तो इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है, या दुनिया में कोई भी देश जो महाशक्ति के रूप में सामने आया है, वहां पर उस देश की शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण योगदान उस देश की डेवलपमेंट में रहा है, ये हम सोच सकते हैं। अभी लगभग हम सभी लोग प्रोफेसर्स है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति हम लाने जा रहे हैं, जिसे अभी हम काफी पिछले 4 सालों से लाए हैं, कुछ राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। अभी लगभग महाराष्ट्र के जो लोग इसमें पार्टिसिपेट है, उनको पता है कि लास्ट ईयर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको इम्प्लीमेंट किया, और इस साल हम अंडर ग्रेजुएट के लिए भी इसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो लगभग शिक्षा नीति के बारे में सभी अच्छी चर्चाएं सभी ओर चल रही है, लेकिन ये जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, जो हम पहले से स्कूली शिक्षा में पढ़ते आए हैं, जो पैटर्न हमारा 10+2 का पैटर्न जो हमारा रहा, वही पैटर्न बदलकर अभी हमने 5+3+3+4 का नया पैटर्न लाया है। अगर हम देखेंगे जो अभी पूरे दुनिया भर में, तो जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो रही है, उस सिस्टम को अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि शायद हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो 5+3+3+4 का जो पैटर्न है, यहाँ पर हम उसके लिए सोच रहे हैं। अबे जो इसके लिए मैं स्कूल शिक्षा के बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें काफी डिटेल्स में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कही गई है, तो प्री स्कूल एजुकेशन की बात कही गई है। अभी तो हम देख रहे हैं, जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, इसको जरा प्री प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए। लेकिन प्री प्राइमरी एजुकेशन का कोई सिस्टम एजुकेशन में नहीं था। वो तो बस कुछ स्कूल चलाते थे, कोई आंगनवाड़ी चलाते थे, कोई कहाँ पे बालवाड़ी चलाते थे, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति से जहां जो बन पाए उस तरह से शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं था। पहली बार इस देश में जो परिपूर्ण शिक्षा नीति बनी, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेकर से रिसर्च तक सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये जो शिक्षा नीति का गठन यहाँ पर हुआ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात इसमें स्पष्ट रूप से कही गई। प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी जो बात कही, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमें अभी जो हम सभी लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम अभी तो हमारे ऊपर इतना हावी था कि चलो बच्चों को अगर पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे नहीं, ए फॉर एप्पल पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें लगता नहीं कि ये बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। मतलब ये सभी जो शिक्षा के बारे में हमारी सोच है, जो अप्रोच है, ये हमने कुछ ढंग से बना के रखा हुआ है। इसलिए जब प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात इस शिक्षा नीति में हुई, तब इसमें कहा गया कि जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन मातृभाषा में दिया जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी मतलब क्या है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? एक
यस सर, आपकी आवाज सुने आ रही है, वीडियो भी क्लियर आ रहा है सर। ये थोड़ा एक, यस, ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात मैं बताने जा रहा था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी। हम देखो, अगर हम सोचेंगे जब हम पढ़े हैं, अभी तो यहाँ पर जो सम्मिलित सभी प्रोफेसर जो है ये देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, और कोई अलग अलग भाषा में, अपनी अपनी भाषा में पढ़ा हुआ होगा। जब हम स्कूल एजुकेशन लेते हैं, जब हम प्री प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो लगभग जो संकल्पनाएं होती है हमें हमारे मातृभाषा में समझ में आती है। जब कोई पहली आवाज देता है तो शायद माँ पुकारता है, जैसे हम मराठी में आई पुकारते हैं। तो ये जो मातृभाषा है, मातृभाषा की जो समझ है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के वक्त हमें होती है, तो इस शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, फर्स्ट प्री प्राइमरी +2 का जो एजुकेशन दिया जाएगा लगभग 5th तक, ये उनकी मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में देना चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से कही है। किसी को लगेगा जो नई शिक्षा नीति आई है ये अंग्रेजी के खिलाफ है, लेकिन अंग्रेजी के खिलाफ नहीं। हमारी जो मातृभाषा है, जिसमें हम समझ सकते हैं, जिसमें हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी भाषा में हमें हमारा एजुकेशन मिलना चाहिए। ये बात स्पष्ट रूप से इस एजुकेशन में कही गई है। अभी अगर हम देखेंगे तो काफी चर्चा हुई, काफी चर्चाओं में आया है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम आगे मेडिकल, इंजीनियरिंग इस जैसे एजुकेशन में टिक पाएंगे। अभी अभी मैंने मुंबई आईआईटी में देखा है कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो उन्होंने हिंदी में फॉर्म किया। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो काफी बुक्स जो है वो लोकल लैंग्वेज में लाने की प्रक्रिया की है। काफी भाषाओं का अध्ययन यहाँ पर हो सके उसमें किताबें लाए, ये भी अभी हर जगह पे शुरू हुआ है। जिन्होंने, जैसे मध्य प्रदेश है, ये जो सभी राज्य है, ये जिन्होंने अभी लगभग 3-4 साल उनको हो गए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, तो उनके यहाँ भी उनकी उनकी भाषाओं में, लगभग हिंदी में, काफी सारे एजुकेशन की बुक्स अभी वो ला रहे हैं। इसमें जैसे टीचिंग लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, उसी तरह से हम सभी लोग प्रोफेसर हैं और हमारा काम है बच्चों को सिखाना, पढ़ाना। अभी इसमें कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन में जो लोग पढ़ाते हैं, दे बिकम एज अ फैसिलिटेटर। जैसे हम पहले बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अभी तो इन्होंने कहा है कि टीचर की मुख्य भूमिका क्या है। टीचर की मुख्य भूमिका है फैसिलिटेटर की भूमिका है। बच्चों को क्या चाहिए ये इन्होंने समझना है और वो उनको देना है। टीचर्स ट्रेनिंग, इसके लिए भी काफी कुछ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। अभी आप लोग देख रहे हो, आप सभी लोग अभी पिछले 10 दिनों से मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग में यहाँ पर हो, और ये सब ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर रहे हो। ये मुझे पता है कि अगर कुछ अपने कैश और ये जो एडवांसमेंट स्कीम्स अगर नहीं होती थी तो शायद हम कम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करते थे, क्योंकि जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम सभी को कहते हैं कि अरे भाई आप लोग तो प्रोफेसर थे और आप सभी को अभी जैसे अपने अपने बोर्ड्स में आपको सिलेबस फॉर्म करना है, करिकुलम बनाना है, तो आप सभी लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, कितने क्रेडिट्स के लिए हमें ट्रांसफर करना है ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ज्यादातर जो भी सिलेबस देख रहा हूं, मैं थोड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस कॉलेज की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो
स्टेट यूनिवर्सिटीज है और जो अदर यूनिवर्सिटीज है, जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, इनके बारे में अगर हमने कहा जाए तो हमें देखेंगे कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है, हम तो बस क्या कह रहे हैं, चलो पीछे का जो आ रहा है सिलेबस, हम उसको क्रेडिट्स में बना लेंगे और सिलेबस बन जाएगा। हम बिल्कुल मेजर्स माइनर्स इसमें अभी तक हम नहीं सोच रहे हैं। तो ये सभी बारे में अगर हमें सोचना है तो इसकी मुख्य जो भूमिका है, ये मुख्य भूमिका जो है, ये आप सभी जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, सम्मानीय सभी टीचर्स प्रोफेसर जो है, इनकी भूमिका है। इसके बारे में भी क्यों कहा गया, तो आप लोगों को पता होगा कि इस देश में लगभग आप 2018 में देखेंगे तो ये जो टीचर्स बनते थे, टीचर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग्स चलते थे, डीएड चलता था, बीएड चलता था, तो लगभग पूरे देश में ऐसे 16,000 कॉलेजेस इस देश में थे और उसमें कुछ जो थे वो पेपर्स में बनाए गए थे। लगभग वहां पर कोई टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स बनाने की प्रक्रिया चल ही नहीं रही थी। तो इसके बारे में कुछ सोचा गया और जब उन्होंने कहा कि अगर टीचर्स ही ट्रेन नहीं हुआ तो शिक्षा किसको देंगे, तो इसीलिए ये जो अभी यूजीसी के लिस्ट में भी ये जो मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है, आप तो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में अभी ये 10 दिनों का कोर्स कर रहे हैं। मैंने देखा लास्ट टाइम इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने जो यूजीसी के सेक्रेटरी थे डॉक्टर मनीष जोशी सर, उन्होंने विजिट किया और काफी सराहना भी की इस इंस्टीट्यूट की कि यहाँ पर काफी अच्छी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में सोचा जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टीचर्स के तरफ हम किस तरह से ले जा सकते हैं, इसके पहलुओं को हम किस तरह से आपके सामने लाए, ये सभी बारे में जो इसके डायरेक्टर साहब है डॉक्टर सतीश पाटिल जी, इन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया। मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में अभी जो प्रोफेसर राफे साहब ने बताया कि हमने किन लोगों को बुलाया और कौन से विषयों पर हमारा डिस्कशन हुआ, ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके सभी जो ये टाइम में आप सभी लोग ऑनलाइन रहे, ये सब कुछ आपने सुना होगा, शायद ये मेरा कुछ रिपीटेशन होगा ऐसे मैं मानता हूं, लेकिन आप सभी लोग जो पिछले 9 दिनों से सुनते आ रहे हैं, इसे अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने यूनिवर्सिटीज में हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करें, ये बात तो बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझ ले, उसे हम पढ़े, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं हो सकती। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनाई गई तो उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, तो उनकी जब मुलाकात हुई थी जो मैंने सुनी, तो उनसे कुछ चर्चा ऐसी हुई कि इस देश में शिक्षा नीति तो इसके पहले भी आई है, शायद प्री प्राइमरी से लेकर रिसर्च तक नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ शिक्षा में जो बदलाव आए हैं, ये बदलाव का इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होता रहा है, इसके बारे में हमने कुछ अनुमान किए हैं क्या? तो कस्तूरी रंगन जी ने काफी अच्छी तरह से बताया कि हम सिर्फ शिक्षा नीति, शिक्षा इस देश के सामने नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी किस दौर में होगा, कौन से दौर में इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, ये भी हमने उस साल के अनुसार इसमें बताया हुआ है। तो ये एक काफी अच्छी बात है। ये नीति में जब हम पढ़ेंगे तो हम महसूस करेंगे कि अरे भाई, ये जो अभी फाइनेंशियली वायबिलिटी जो है एजुकेशन की, ये कब तक आएगी, मतलब शिक्षा के क्रियान्वयन का एक्शन प्लान जो बनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन अभी महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। देश भर में काफी स्टेट्स ने इसे स्वीकारा है, कुछ स्टेट्स में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन वो भी हो जाएगा। उनको ये स्वीकारना ही होगा, इसमें आना ही होगा, ऐसी ही बात है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की बात हम करते हैं, तो हमारे सामने आता है कि इसका पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस क्या था। कोई भी शिक्षा नीति हो या कोई भी नीति हो, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें लगभग कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे हम कहेंगे कि पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस इसमें क्या था, इसकी सोशली डिजायरेबल ये नीति है क्या, इसमें टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इसमें है क्या, फाइनेंशियल वायबिलिटी इसमें है क्या, जुडिशियली टेन्यूबिलिटी इसमें है क्या, इमोशनली रिलेटेबल ये शिक्षा नीति है क्या, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। इससे कुछ अंगों पर अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस वो तो हो गया है, लगभग पूरे देश में शिक्षा नीति का अवलोकन हो गया है। सोशली डिजायरेबल है क्योंकि हम प्री प्राइमरी से लेकर रिसर्च तक बात कर रहे हैं। छोटे से गांव देहात से लेकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। सभी लोगों को हम इसमें सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का फिजिबिलिटी इसमें है क्या, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो काफी जो अभी इसमें स्किल एजुकेशन, जो डिस्टेंस लर्निंग और ये जो सभी बातें आई है, इसके लिए भी हम टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इसमें देखेंगे। जुडिशियली तो काफी हम अभी जुडिशियली में इसको अभी बताया है कि चलो ये तो अभी लगभग 2047 तक इसको कुछ भी करके इम्प्लीमेंट करना है और ये हो जाएगी। ये इमोशनली लोगों ने अभी इसे स्वीकारा है और ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। इस बारे में हमने काफी डिस्कशन किया है, आप लोगों ने भी काफी पिछले 8-9 दिनों में इसके बारे में चर्चा की होगी। मैं इसमें सबसे ज्यादा संदेह मुझे जो हुआ है वो है कि ये फाइनेंशियली वायबिलिटी इसमें है क्या, इस शिक्षा नीति में। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, आप लोग तो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, आप लोग शिक्षा में काफी सालों से काम कर रहे हैं और आप लोग शिक्षा के बारे में आपका मत भी हमेशा व्यक्त करते हैं। जो हम प्रोफेसर है, बच्चों के सामने हम हमेशा जाते हैं, बोलते हैं। अभी ऐसा है कि जो ग्रॉस डेवलपमेंट रेशियो जो है इस देश का, तो जीडीपी जो है हमारी इस देश की, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल वायबिलिटी इसकी 3.1% अभी तक इस देश की रही है। अभी 3.1% की वायबिलिटी होने के कारण अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा के काफी प्रॉब्लम्स है। हम देखते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं उसके लिए काफी जीडीपी रेशियो हमें बढ़ाना होगा। तो इस शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा जो जीडीपी होगा वो 6% होगा। मतलब शिक्षा के क्रियान्वयन का जो भी शुरुआत होगी वो हमारी लगभग अभी इस क्रियान्वयन के वक्त जब हम अभी जाएंगे अगले 5 सालों में, उसके 5 सालों में जो भी हमारे 5 इयर्स प्लान बनेंगे उसमें जो जीडीपी बढ़ेगा वो 6% तक हमें बढ़ाना है। ये सभी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमने देखी है ये हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात हुई है और हम शिक्षा के बारे में बाकी देशों को कंपेयर करते हैं, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, चाइना है, इनकी अगर हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखें तो वो काफी हमारे से ज्यादा है, लगभग हमारे से 2 गुना है, 3 गुना है, काफी ज्यादा है। तो हमें लगभग ये 6% तक हमें बढ़ानी पड़ेगी। ये जो इस शिक्षा में आपने देखा होगा कि जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, इसका नाम बदलकर फिर से उन्होंने कहा कि इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में हमारी बात होगी तो इस एजुकेशन मानव संसाधन विकास नहीं है, तो ये
एजुकेशन के बारे में बात होगी और फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसे बताया गया। आप लोगों ने अगर ये सभी लास्ट ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में देखा है, दिस पॉलिसी प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग emphasis on encouraging an interdisciplinary study, offering novel subjects and giving student access to new opportunities and flexible course options. ये सभी शिक्षा के बारे में कुछ नए आयाम हम बच्चों के सामने ला रहे हैं, जो अभी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये खुल जाएंगे। अभी हमने देखा है कि जो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स कहे हैं कि शिक्षा का इंटरनेशनलाइजेशन उन्होंने बताया है। मुझे लगता है कि जो की पॉइंट्स एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है, नेशनलाइजेशन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन जो बताने जा रहे हैं, इसमें अभी क्या होगा, तो जो टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो इस देश में आ सकती है और अपने कैंपसेस ओपन कर सकती है। ये जो इस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर होगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटिंग फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो हमारा यहाँ पर होगा। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, ये बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। जो रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस है, इसके बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है। हम जानते हैं जो शिक्षा का कुछ सर्वेक्षण हुए और उसमें देखा गया कि भारत में ज्यादातर लोग 12वीं 10वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वो पढ़ नहीं पाते, या उन्होंने एडमिशन भी लिया तो काफी देखते हैं कुछ लड़कियां होती है जिनकी शादी होती है, जिनको कुछ ना कुछ काम होते हैं, लोगों को खेती करनी पड़ती है, इसलिए वो शिक्षा छोड़ देते हैं। बाद में उनको लगता है कि शायद हम शिक्षा ले, लेकिन वो अभी इस सिस्टम में ले नहीं पाते। तो अभी एक फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन जो लाया है काफी महत्वपूर्ण है। अभी अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा फर्स्ट ईयर हुआ है और मैं अभी आगे नहीं पढ़ सकता, आपने ये भी सुना है कि अभी हर एक बच्चों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपना एक खाता बनाना पड़ेगा। जैसे इस देश में पहले आधार कार्ड बनाए गए, कुछ नंबर्स दिए तो काफी गड़बड़ी हुई, लोगों को लगा कि अरे भाई हमें ये क्या दिया जा रहा है, क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी हम देखेंगे तो काफी चीजें आधार कार्ड के नंबर के ऊपर काफी अच्छी तरह से अभी हो रही है और ये सब अभी हमें यूज टू लग रहा है। अब इसमें कोई नया है, कुछ बदल हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है, इसके लिए आपको अभी कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, आपका भी कुछ एक अकाउंट बनाया जाएगा। जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ेंगे तो वही सब आपके जो क्रेडिट्स है वो उसमें जमा होते रहेंगे। हर वक्त आपको अलग अलग से जहां जहां से क्रेडिट लेना है वो आप ले सकते हैं और आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो जमा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर हुआ और आप नहीं पढ़ सकते हैं तो विड्रॉ आफ्टर द फर्स्ट ईयर, देन यू हैव टू रिसीव अ सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर हुआ है। जैसे अभी फर्स्ट ईयर हुआ तो हमें बस एक मास मेमो मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। शायद एक 2-4 साल में हमने कहीं एडमिशन नहीं लिया तो वो एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर अगर आपने पूरा किया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और थर्ड ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको बैचलर्स डिग्री भी मिल जाएगी, और आपने फोर्थ ईयर कंप्लीट किया तो बैचलर्स विथ रिसर्च ऐसा आपको पीजी का भी डिग्री मिल जाएगा। मतलब जो हम इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके मुताबिक हमें जो भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो लेने हैं वो क्रेडिट्स हम कभी भी और कैसे भी ले सकते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जो इसमें कही गई है, दैट्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हमारे एजुकेशन का, तो ये अभी हमने अगर देखा तो 2018 में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा गया वो लगभग 26.3% था। तो अभी ऐसा है कि एनईपी का प्लानिंग हम कर रहे हैं, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में करना है। इसके लिए हमने काफी बदलाव भी लाए हैं, काफी चेंजेस हमें इसमें करना है। तो ये जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होगा, इसे हमें इनहांस करना है। और अभी जो ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये 26.3%, ये हमें लेकर 50% तक जाना है। ऐसा एक रोल मॉडल, ऐसा एक प्लान, मैंने जो कहा ना, कस्तूरी रंगन जी ने बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, ये भी इसमें बताया गया है। तो ये जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, ये 50% तक हमें लेके जाना है, 2035 तक हमें लेके जाना है, ये भी हमें इसमें बताया है। ज्यादातर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। ये जो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का एक अप्रोच इसमें बताया गया कि किस तरह से होना चाहिए। अभी इसमें मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ की है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। तो आप जो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड दीज फैकल्टीज में जो पढ़ रहे हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हम उसको कहेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऐसा भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है, उसमें बताया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और एक बात जो कही गई है, वो है एटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी तो हमारे यहाँ तो काफी प्रोफेसर्स और सभी शिक्षा के लोग काफी चिंतित है कि अरे भाई, ये एटोनॉमी दे रहे हैं तो फिर हम जो ग्रांटेड टीचर्स है, हमारा क्या होगा, हमारे वर्कलोड का क्या होगा, इस बारे में काफी हम लोग चिंतित है। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फाइनेंशियल एटोनॉमी के बारे में तो कहा गया है, लेकिन एकेडमिक एटोनॉमी के बारे में भी इन्होंने कहा है। जो फाइनेंशियल एटोनॉमी ले सकते हैं वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो तो ले सकते हैं। और एक जो बात मुझे आपसे कहनी है कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई है, ये ज्यादातर जो, अगर स्कूल एजुकेशन के बारे में भी हम सोचेंगे, तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज है, इसके बारे में एक सोचा गया है। लेकिन हायर एजुकेशन में भी जो एटोनॉमी के बारे में सोचा गया है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का काफी सोच विचार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। ये अगर हम एटोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो लगभग महाराष्ट्र में अभी लगभग पूना और मुंबई यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पर हमने देखा जाए तो लगभग 50 से ज्यादा कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटी जो है, जो एटोनॉमस हुई है। और अगर हम देखें तो लास्ट एक साल का उनका अगर हम अध्ययन करेंगे, तो काफी अच्छी एकेडमिक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी इसमें अच्छी तरह से हुई है। तो केवल एटोनॉमी देना ही नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, इसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इसके जो स्ट्रेटेजी जो है, ये भी अकाउंटेबिलिटी की इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बनाई गई है। ये जो रेगुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें ये बात कही हुई है। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, इसके बारे में इसमें कहा गया है। जो गर्ल्स है, लो इनकम फैमिलीज है, जो स्टूडेंट्स है, जो डिसेबिलिटीज है, ये जो पॉलिसी पूरे देश भर में प्लेसेस होती है, इसके बारे में इसमें विचार किया गया है। इसमें जो लो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों के बारे में सोचा गया है, डिसेबल स्टूडेंट्स के बारे में सोचा गया है, जैसे कि उनको
हम कुछ अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है। ये भी पहली बार हुआ है कि शिक्षा नीति का विचार करते हुए इस देश में इक्विटी का भी विचार हुआ है। समाज के सभी स्तरों को शिक्षा मिले, यह विचार इस शिक्षा नीति में हुआ है। इस शिक्षा नीति में और भी जो महत्वपूर्ण भाग इसमें है, रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में यहाँ पर किया है। यूनिवर्सिटीज की प्रायोरिटीज जो है, अभी तो पीछे यूजीसी ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज को उनका स्टेटस डिक्लेयर करना है। यूनिवर्सिटी को स्टेटस डिक्लेयर करना है मतलब क्या करना है? तो अभी बताया गया था यूनिवर्सिटीज को कि आप क्या एफिलिएटेड कॉलेज रन करने वाले यूनिवर्सिटीज रहने वाले हो, आप कैंपस यूनिवर्सिटी रहने वाले हो, या आप रिसर्च यूनिवर्सिटी रहने वाले हो। आपका स्टेटस क्या रहेगा यूनिवर्सिटी का? यूजीसी ने पीछे पूछा है यूनिवर्सिटीज से। अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज ने बताया है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं या कोई बताएंगे अभी हमें किस तरह से करना है। लेकिन लगभग 2035 में या उससे भी पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेज रन करने के लिए नहीं चलेगी। मतलब लगभग 2035 में यूनिवर्सिटीज को कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे। एक तो उनको इस बारे में देखना पड़ेगा कि हम अभी खुद ऑटोनॉमस हो जाए और हमें इसके लिए काम करना है। तो ये सभी जो चीजें हैं, अगर हम देखेंगे तो रिसर्च एंड इनोवेशन, ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में कहा गया है। इसमें करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की और क्रेडिट ट्रांसफर की जो बात कही गई है, इस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब हम शिक्षा एकेडमिक्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो करिकुलम में दी हुई है, क्रेडिट ट्रांसफर्स जो दिए गए हैं, ये बच्चों को किस तरह से मिल सकते हैं। ये देखो, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा अगर घर का लड़का हुआ तो उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी और क्रेडिट ट्रांसफर जब हमारे बच्चे फॉरेन एजुकेशन में पढ़ते हैं तो ये हमें समझ में आती है। हम इसके बारे में सोचते हैं, इसको समझ लेते हैं और हम क्रेडिट ट्रांसफर की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटीज में, भारतीय कॉलेजेस में हम जब पढ़ते हैं और जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कैसे बन पाएगा, ये कैसे हो पाएगा। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब इन इस भारत में, ये बहुत चैलेंजिंग है, हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन अभी जो रेंज ऑफ कोर्सेस है, सब्जेक्ट्स है, इसके लिए जो बच्चों के करियर गोल्स है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनके, इनको देखते हुए हमें करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तो बस हम बच्चों को कुछ ग्रुप्स दिया करते थे जो उनके तीन या दो या कुछ ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और जो माइनर सब्जेक्ट्स है और उनके जो कुछ क्रेडिट्स, कुछ स्किल कोर्सेस, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा उसमें वर्किंग नहीं किया करते थे। लेकिन अभी हमें ये सब करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो एकेडमिक अभी शुरू होगा, इस साल हुआ है, अगले साल भी होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर हम हर साल का सिलेबस हर साल फॉर्म करते हैं। शायद फर्स्ट ईयर का सिलेबस बन गया होगा, सेकेंड ईयर का अभी बनने जा रहा होगा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि जो सिलेबस हमने बनाया है उसमें भी कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो उसे हमें ओपन रखना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम आगे वाला सिलेबस बनाएंगे तो हमें देखना होगा कि उस विषय में अभी पूरे देश में, दुनिया में
कौन सी पढ़ाई होने जा रही है, उसे हम कितने क्रेडिट्स में पढ़ाना हमें पड़ेगा, ये हमें अभी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ये अभी बहुत ही जरूरी बातें इसमें कही गई है। मतलब अभी अगर बच्चों को शिफ्ट्स में भी अगर पढ़ना है, अभी शायद हम एक साथ 2 डिग्रीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर इस नई शिक्षा नीति में हमें 2 डिग्रीज पढ़ना है, तो एक रेगुलर और एक ऑनलाइन डिग्रीज अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी हम पढ़ सकते हैं। शायद आगे इसमें और बदलाव आएंगे, आगे हम इससे भी ज्यादा कुछ कोर्सेज, स्किल कोर्सेज और ये एक साथ पढ़ पाएंगे, और एक साथ उसके क्रेडिट्स भी हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जमा कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है। जो मैं टीचर्स के लिए कहता हूं कि करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में हमने ज्यादा समझ लेना चाहिए, और बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। एक पीछे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्कूल कनेक्ट का प्रोग्राम चलाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 12th पास हो जाते हैं और ग्रेजुएशन में आएंगे, तो अभी उनको समझ नहीं आएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, अभी मेजर में कौन से सब्जेक्ट्स लेके जाना है, माइनर में हमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, क्रेडिट्स हमें कौन से, स्किल जो हमें लेनी है वो हम कौन से ले सकते हैं। ये जैसे हर साल बदलता जाएगा, वैसे हमें बच्चों को पहले से ही गाइड करना पड़ेगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी करिकुलम में आई है, जो अभी पढ़ने में आएगी, तो इसे अच्छी तरह से बच्चों के सामने ले जाना, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से उच्च शिक्षा में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी ये बदलाव स्वीकारा भी है, और वो बच्चों के सामने कॉलेजेस में ये सब अच्छी तरह से ले जा रहे हैं। हमने तो अभी कुछ जो इंडिपेंडेंट जो कॉलेजेस अभी हुए हैं, तो कुछ कॉलेजेस को हमने विजिट दी, तो हमें काफी अच्छा बदलाव दिखाई दिया, जहां पर करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में काफी अच्छी बात कही गई, और ये वहां पर शुरू भी हुआ है। हम हमेशा कहते हैं, राष्ट्रीय अभी जो शिक्षा लेते हैं, तो अरे हमें कोई काम पड़ा तो चलो, टेक्निकल वालों को कुछ काम आया तो हमें एआईसीटी में जाना पड़ता है, हमें उच्च शिक्षा की कोई बात आई तो हमें यूजीसी में जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये इन्होंने क्या किया है कि जो कुछ न्यू रूलिंग बॉडीज जो है, यहाँ पर जो हायर एजुकेशन कमीशन यहाँ पर जो लाया है, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन, यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि यूजीसी है, एआईसीटी है, ये जो सभी बोर्ड्स है जो अलग अलग विभिन्न जगह पर काम करते हैं, इन सभी को डिसमेंटल किया जाएगा, और शिक्षा का वन रूफ सेंटर बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। तो एआईसीटी, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ऐसे जो ब्रांचेस है, इसका कोई महत्व ज्यादा रहेगा नहीं, और ये धीरे धीरे डिसमेंटल की जाएगी, और नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत ये नया शिक्षा धोरण जो है, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी इसमें काफी बात कही गई है। द वैल्यूज ऑफ मतलब वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के बारे में, जो अप्रेंटिसशिप के बारे में इसमें कहा गया है, इसमें वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्टिविटीज के बारे में कहा गया है, रेगुलर स्कूल्स टू असिस्ट स्टूडेंट्स गेट द नेसेसरी स्किल्स, इसके बारे में इसमें काफी अच्छे रूप से जो स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक कौन कौन सी स्किल्स हमें लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, कितनी क्रेडिट्स की लेनी चाहिए, और किस तरह से हम वोकेशनल एजुकेशन में जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इसके बारे में भी एक अच्छी बात इसमें कही गई है। ये सभी शिक्षा के बारे में हम जब सोचते हैं, तो हम कहते हैं ये शिक्षा तो महंगी होती जा रही है, देश भर में
किस तरह से हम शिक्षा के बारे में सोचेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्ट टू द स्टूडेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में कहा गया है। जो गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफी अच्छी बात कही है। जो एसटी, एससी, ओबीसी, एससी, डीजी स्टूडेंट जो है, जो स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं, इसके बारे में इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात कही गई है कि उनको इनकरेज किस तरह से किया जाए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उनको ये फैसिलिटीज उस जगह पर किस तरह से दी जाए, इसके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। मैंने पहले भी कहा कि स्कूल एजुकेशन के बारे में मैं जो बात करता था, उसमें कहा गया है कि इनकरेजमेंट टू यूज इंडियन लैंग्वेजेस। अभी जो प्रांतीय रचना है, वहां पर जो इंडियन लैंग्वेजेस है, उसमें स्कूली शिक्षा भी है। और अभी तो जो हम हायर एजुकेशन में, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में, शायद अब हम कॉमर्स अगर हमें पढ़ना है तो हम हिंदी में पढ़ सकेंगे। कल शेयर मार्केट के बारे में अगर हमें जानना है तो हम हिंदी में जान सकेंगे। कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में मुझे अगर कुछ सीखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में अगर मुझे कुछ जानना है, तो मैं मेरी भाषाओं में उसे पढ़ सकता हूँ। उसका जो हिस्ट्री है, इंटरनेशनल हिस्ट्री है, ये भी मैं अपनी भाषा में जान सकता हूँ। अभी तक तो हम देख रहे हैं ज्यादातर बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो आते हैं। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो देहाती बच्चे हैं, ये जो टेक्निकल एजुकेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो डिफेंस एग्जामिनेशंस और इंजीनियरिंग सिलेबस, इसमें नहीं जा रहे। ये डरते हैं कि हमें अगर इंग्लिश नहीं आई तो शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी रीजनल लैंग्वेजेस में हमारा कोई भी सिलेबस है वो हमें बनाना पड़ेगा। शायद मैंने कहा है कि आईआईटी मुंबई ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हिंदी में बनाया है, तो अभी वो शुरुआत होगा। कोई मेडिकल कॉलेज में कुछ जो मानव विकास की बात कही गई है, वो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में कही गई है। तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर पाली, प्राकृत, पर्सियन, ये भी बनाए गए। अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा होगा कि जो लोग महाराष्ट्र से, वो समझेंगे कि जो मराठी जो भाषा है उसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया। उसमें संस्कृत भी है, उसमें पाली भी है। अगर हम ये देखेंगे तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सभी भाषाओं के बारे में देश में सोचा जा रहा है। क्यों सोचा जा रहा है? क्यों उस रीजन में? ये देखो, अगर हम दुनिया के बारे में सोचेंगे तो अभी हम जानते हैं जापान जैसा देश है, छोटा देश है, जो अपनी भाषा को प्रमोट कर रहा है। अभी कुछ जर्मनी के साथ हमारा महाराष्ट्र जो स्टेट है, इसका कुछ एमओयू हुआ है। और जर्मनी ने कहा है कि आपके पास से कुछ स्किल एजुकेशन लिए हुए बच्चों को हम हमारे यहाँ पर अप्रेंटिसशिप देंगे, कुछ जॉब्स देंगे, लेकिन उनको जर्मन आनी चाहिए। अभी जैसे जर्मन भाषा है, जर्मन लोगों को लगता है जर्मन आनी चाहिए, उनके लोगों को उनकी भाषा में सीखकर कुछ अच्छा करना है। तो वही ये छोटे छोटे देशों में उनकी भाषा बोली जाती है। हम चीन जैसे देश को देखेंगे, वहां पर भी उनकी भाषा बोली जाती है। वहां पर भी अंग्रेजी का जो उपयोग है वो काफी कम किया जाता है। हम अभी देखेंगे कि बाहर की भी जो स्टेट्स है, वहां पर तो लोग, ये जो जर्मन लोग है, ये जो चीनी लोग है, वो उनकी भाषा में बात करते हैं। जहां जरूरत है वहां पर अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। तो ये जो इनकरेजमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी जोर देकर कही गई है। तो मुझे लगता है कि इसका काफी बेनिफिट हमें होगा। जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ऐसे भी इन्होंने स्थापित किया है। आईआईटीआई, जो जहां पर यहाँ ये सभी लैंग्वेजेस की किताबों के बारे में सोचा जाएगा, उसे लोगों के सामने लाया जाएगा। ये सब अभी होने जा रहा है, इसके बारे में सोचा गया है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोचा गया है। ये देखिए कि जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में बढ़ेगा, तभी हम, अभी जो ये मोड चल रहा है, आप लोग देख रहे हो, कोई कोई राज्य में है और हम सब लोग अभी ये पीछे जब से हम जूम या कोई ये जो मीट ये हम करते जा रहे हैं ना कोविड के बाद में, तो अब हम काफी यूज टू हो गए हैं। पहले पहले हमें लगता था ये किस तरह से हो पाएगा, ये हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो जब तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक इसके बारे में हम इसको टीचिंग लर्निंग में नहीं लाएंगे, तब तक हम इसमें यूज टू नहीं होंगे। देखिए, आप सभी लोग अभी पिछले 8-9 दिनों से है या पीछे कोविड से है, आप तो काफी आपकी मीटिंग्स भी होंगी, काफी आपकी चीजें हैं। अभी तो ऐसे है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी डिजी लॉकर्स में आप लोग रख रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन जो है ये काफी अच्छी तरह से हो रहा है। तो एजुकेशन में भी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन के लिए, उसे बढ़ावा देना पड़ेगा, इसको इनकरेज करना पड़ेगा, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में इसको लाना पड़ेगा। हमें ये जो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस है, ये जो सभी चीजें हम ऑनलाइन दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं देश में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारे महाराष्ट्र में YCMU यूनिवर्सिटी है, यशवंतराव चौहान मुक्त यूनिवर्सिटी, इनके जो लेक्चर्स अभी हो रहे हैं, तो ये इनके क्लाउड पे हो रहे हैं, ये इनके वेबसाइट पे हो रहे हैं, ये ऑनलाइन हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी जोर देकर कहा गया है कि अभी हमें ये लाना पड़ेगा, एजुकेशन में हमें इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो जस्ट मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, और अभी PM उषा से हमें 100 करोड़ रुपए भी मिले हैं। तो हम सोच रहे थे यूनिवर्सिटी में क्या किया जाए, तो हमने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के बारे में कहा गया है, तो लगभग हमने सोचा कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंप्यूटर सेंटर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स, हमें हमारा कुछ क्लाउड करना पड़ेगा, कैंपस वाईफाई करना पड़ेगा। ये जो सभी चीजें हैं टेक्नोलॉजी की जो हम दे सकते हैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, उसमें हमें अभी जाना होगा, उसमें जाकर हमें काम करना होगा, तभी हम बच्चों से यूज टू होंगे, तभी हम बच्चों से लाइव कांटेक्ट में रहेंगे। मैंने जो पहले कहा है कि अभी तो हम फैसिलिटेटर की भूमिका में काम करेंगे। फैसिलिटेटर की जो भूमिका है वो क्या है, बच्चों को जब भी जो भी चाहिए वो हम उनको उसी समय दे सके। तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा, तो इससे हम बच्चों की काफी मदद उसी समय कर सकेंगे। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये काफी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है। और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने बनाया है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये अभी फॉर्म हुआ है और उसके थ्रू ये सब टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात अभी पूरे देश में इंपावर करने की बात अभी हो रही है। ये रैशनलाइज्ड एजुकेशन आर्किटेक्चर, इसके बारे में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई है। ये जो एजुकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप लोगों ने भी, मैंने अभी सुना बाफी सर जब बता रहे थे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मैं भी अभी पिछले हफ्ते एक यहाँ का कॉलेज था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो उत्सव होते हैं तो उसमें ज्ञान क्या है, उसमें विज्ञान क्या है, इसके बारे में अभी चर्चा शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में सोचेंगे, तो ये हम क्यों सोच रहे हैं, ये अगर हमने कुछ पढ़ाई की तो जब 1920 में थॉमस मुनरो नाम के जो मद्रास रीजेंसी में अंग्रेज के अफसर थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत में एक एजुकेशन सिस्टम चल रही है
ऐसा उन्होंने उस केस में लिखा है। काफी विद्यालय, विश्वविद्यालय इस देश में बने हुए, और ये तो हम जानते हैं कि नालंदा तक्षशिला का उदाहरण हम हमेशा देते रहते हैं कि इस देश में पहले भी शिक्षा का काम होते रहा है। तो 1920 में जब थॉमस मुनरो ने बताया कि इस देश में पहले से शिक्षा दी जा रही थी, और वो शिक्षा कैसी दी जा रही थी, जो अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके उदाहरण देते हुए हम सोच रहे हैं, तो काफी लोगों को लगता है कि शायद हम क्या ये जो पीछे जो गुरुकुल परंपराएं चल रही थी, उस तरह से शायद हमारा एजुकेशन बदल जाएगा। अभी हम ये जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, अभी ये जो हम फ्लेक्सिबिलिटी कह रहे हैं, एक बारे में हम तो ऐसी बात कह रहे हैं और दूसरे बारे में हम कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा की भी बात कह रहे हैं। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा की बात कहते हुए उन्होंने, जब मैंने कहा ये थॉमस मुनरो ने जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं आपको, ये कुछ मैं खुद ने बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो भारत में शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन, ऐसी शिक्षा दी जाती थी। मतलब हमें जो पढ़ाया जाता था वो उस जगह पे हम जाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, वो देखते थे, वो सुनते थे और हम पढ़ते थे। ऐसी शिक्षा नीति इस देश में चलती आई। अभी भी जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन देने चाहिए। अभी शिक्षा के लिए कोई सब्जेक्ट या कोई किस तरह के हमने शिक्षा लेनी चाहिए, इसका भी कोई बेस नहीं होता था। डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते थे, कौन कौन सी शिक्षा हमें लेनी है वो सभी शिक्षाएं हम ले सकते थे। और ये जो शिक्षा है ये हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई थी। अभी पीछे मैंने एक संगोष्ठी में मैं गया तो मैंने कहा कि अरे भाई, हम जब भी भारत में शिक्षा की बात कहते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा की जो देवता है देवी सरस्वती, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अभी जब दुनिया बदल रही है, दुनिया में काफी बदलाव होते जा रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं, और बात तो हम कर रहे हैं एजुकेशन की, डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, और यहाँ पर जो हो रहा है ये हम देवी देवताओं की, गुरु शिष्य परंपराओं की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ 4 साल पहले इंडोनेशिया नाम का जो देश है, ये मुस्लिम बहुल कंट्री है, इसके पंतप्रधान जब अमेरिका गए तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक बड़ी सरस्वती की मूर्ति उन्होंने उन्हें भेंट दी, जो अभी वॉशिंगटन में लगाई हुई है, जहां पर काफी व्हाइट सफेद कलर की वो मूर्ति वहां पर अमेरिका में अभी स्थित है। जिस इंडोनेशिया जैसे देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो रामायण है, गरुड़ा उनकी एयरलाइंस है। ये देश भर में कुछ ना कुछ जो लोग सोच रहे हैं, परंपराओं के बारे में सोच रहे हैं, संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, ये ऐसा है ना कि अगर हम हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अभी देख रहे हैं कि पूर्व की संस्कृति तो अभी नष्ट होने जा रही है। वहां पर फैमिलीज नहीं रही, वहां पर अभी सभी तरह से कुछ नया में जो भी पुराना है और जो अच्छा है उसको साथ में लेते हुए, और जो नई टेक्नोलॉजी है जो भारत को महासत्ता बना सकती है, ऐसी सभी टेक्नोलॉजीज को साथ में लेते हुए, इन दोनों चीजों को हाथ में हाथ मिलाते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्होंने कही है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल परंपराओं का मिलाप नहीं है, तो ये परंपराओं का जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, इसमें टेक्नोलॉजी, इसका विज्ञान जो है, ये हमें इसमें लाना है।
ना कि इसमें कुछ अंधश्रद्धा है वो हम उसे दूर कर देंगे, लेकिन इसका जो विज्ञान है वो हमें बच्चों के सामने लेके आना पड़ेगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके बारे में इसमें जो कहा गया है, ये काफी डेडिकेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ई कंटेंट्स होंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज होंगी। ये जो सभी इनिशिएट करना है स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उन्होंने देखो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं कहा है। डिजिटलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डिजिटलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमें जाना पड़ेगा और ये बात हमें इसमें करनी पड़ेगी। अभी ये जो इंडिपेंडेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज है, लीगल यूनिवर्सिटीज है, ये सभी यूनिवर्सिटीज अभी 2035 तक दे ऑल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के तहत ये आ जाएगी। ये सभी नेशनल एजुकेशन के की पॉइंट्स के बारे में मैं आपके सामने ये सभी बातें करते आ रहा हूं, लेकिन मुझे बड़े गर्व के साथ कहना मैं यहाँ पर चाहता हूं कि इस देश को जब हम महासत्ता बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि हर एक देश को उसकी जो शिक्षा है, संस्कृति है, यह उस देश को बनाती। अभी पूरी दुनिया इस देश को ज्ञान का भंडार देख रही। अभी हम देखे जाए तो अमेरिका में आप देखिए, लंदन में आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए, सभी जगह पर ये जो भारतीय है, ये वहां की टेक्नोलॉजीज, ये वहां की इंडस्ट्रीज, ये वहां की एजुकेशन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। इसका परसेंटेज भी काफी बड़ा है। तो आज दुनिया हमारी तरफ देख रही। भारत यह एक यंगेस्ट कंट्री के रूप में भी दुनिया के सामने है। तो जब हम विजन 2047 की बात करते हैं और जब डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी की व्याख्या बताते हुए हम 2030 में क्या करेंगे, 2035 में क्या करेंगे, 40s में क्या करेंगे, और एट द एंड ऑफ द 2047 में इस देश की शिक्षा नीति का जो पूरा बदलाव बताया गया है, जो जो बातें इसमें बताई हुई है, ये सभी को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई है, ये तो इन्होंने लिखी है, बताई है, इसमें हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, ये टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में बताई जा रही है। लेकिन बात ऐसी है कि इसको लेकर कौन जाएगा भाई? तो ये जो आप लोग हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण घटक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के है। अगर इस देश के शिक्षक, इस देश के प्रोफेसर ने नहीं सोचा कि हमें हमारे देश को महासत्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये जो हाइलाइट्स, ये जो की पॉइंट्स बताए हुए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम जब तक बच्चों के सामने, समाज के सामने नहीं लेकर जाएंगे, तो शायद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, इसका क्रियान्वयन सही अर्थों में हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, ये हम सब लोग। तो मैं आप सभी लोगों से ये विनती भी करता हूं और आपसे आशा भी रखता हूं कि ये जो आज मालवीय मिशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो पिछले 9 दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मंथन हुआ है, और इस मंथन में जो भी चीजें सामने आई है, हर एक को अलग अलग पहलुओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी मालूमात हुई होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में जरूर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, टेक्नोलॉजी का, ट्रांसफॉर्मेशन का,
इंडियन लैंग्वेजेस का, टेक्नोलॉजी का, ये जो सभी बातों का क्रियान्वयन हमें रिसर्च के बारे में तो आप लोगों को मैं थोड़ा ये रह गया, लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो स्पेशली रिसर्च के लिए बनाया है। और अभी हमने देखा है कि इस साल का जो बजट डिक्लेयर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें 35,000 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द नेशनल रिसर्च बजट। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 35,000 करोड़ का बजट मिला है। तो आप देखिए, रिसर्च के लिए एक नए आयाम अभी शुरू हुए हैं। इस देश में रिसर्च के लिए जो सोचना है, जो हमें करना है, अभी तो ऐसे हम चांद पे जा रहे हैं, अभी तो सूरज की तरफ भी हमारा एक यान गया हुआ है और हम वहां पर काम कर रहे हैं। तो भारतीय विज्ञान के बारे में, विज्ञान की परंपराओं के बारे में अभी मैं सुन रहा था, जोशी मैडम ने बताया कि विज्ञान के बारे में जो टेक्नोलॉजी, उन्होंने काफी अच्छा वर्ड यूज किया जो भारतीय इसमें काफी बार करते हैं, जुगाड़ बनाना और कुछ रिसर्च करना। ये जो अभी उन्होंने बताया ना, ये काफी मुझे पसंद आया रिसर्च के बारे में। वो तो कॉमर्स के बारे में बात कर रही थी, अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं विज्ञान के बारे में सोचता हूँ। तो ये जो रिसर्च है हम जो हमेशा करते हैं और ये हमें करना है। अभी ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ है, मेड इन इंडिया के बारे में इस देश में कहा जा रहा है, कॉमर्स के बारे में कहा जा रहा है, फाइनेंशियल असेस के बारे में हम सोच रहे हैं, ये सभी चीजों को हमें अगर लाना है तो रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में हमें सोचना होगा। अभी हर यूनिवर्सिटीज में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना हुई है। इंक्यूबेशन और रिसर्च के बारे में देश सोच रहा है, यूनिवर्सिटी सोच रही है, स्कूल सोच रहे हैं। और जब हम ये सोचने लगे हैं, तब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करते हुए इस रिसर्च के बारे में हम सोचेंगे, तो हम डेफिनेटली भारत को एक मजबूत राष्ट्र के लिए एक महासत्ता के रूप में संपूर्ण दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं, मैं भी और इसके बारे में कहूंगा, विज्ञान के बारे में कहूंगा, भारतीय परंपराओं के बारे में कहूंगा, तो कहता रहूंगा। आप लोग भी इसके बारे में अभी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आगे के कुछ दिनों में दिवाली भी आएगी। आप सभी लोगों को मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दीप जलाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी जगह पे जाइए और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दीप है, ये हर जगह पे हम लगाएंगे तो एक अच्छी दीपावली सभी समाज के लिए, शिक्षार्थियों के लिए हम दे पाएंगे। ऐसे में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं और ये जो मेरा थोड़ा लंबे समय से जो चल रहा है, इसको भी मैं विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, यहाँ पर विशेष रूप से मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मुझे ये सम्मान भी दिया। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतनी खूबसूरती से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक सिंपल लैंग्वेज में हम सभी को आपने जो उसके मूल उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो हमारे सामने रखे। इसके लिए इन सभी अध्यापकों की ओर से मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया और एक जो कंक्लूडिंग रिमार्क जो है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ओरिएंटेशन कोर्स को आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हमारे मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के लिए हमेशा ऐसे ही रहे, हम ऐसी अनुकामना आपसे करते हैं सर। प्रोफेसर सतीश पाटिल सर, माननीय संचालक मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, वो भी इस मीटिंग में ज्वाइन है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस वैलिडिटरी सेशन का प्रेसिडेंशियल रिमार्क दें। सतीश पाटिल सर। Good evening, everybody. Respect the chief guest of this valedictory function, respected Sanab sir. Another guest of honor, respected Sri Swati Joshi ma'am, my colleague Dr. Rafe, and all respected, distinguished fellow participants.
we were listening since last 1 hour to Dr. Gajanan Sanap. He has highlighted NEP in its letter and spirit. He also mentioned a lot of things that needs to be taken carefully into the curriculum, and to see that the India should become a Vishwaguru in the years to come. But the most important part is that what it has been mentioned in the this national education policy, that whatever the teaching pedagogy we had earlier, we need to bring some deliberate changes into it and bring some techniques, teaching techniques. And while framing the curriculum, we should keep in mind that whatever the curriculum we frame, that should be job oriented. And Dr. Sanap sir has rightly mentioned that this national education policy's objective is, one of the objectives is that to improve the GR from 26.1 to 50 by 2035. But for that, what we need to do, that as it has been, it might have discussed by all the experts during last week, that we need to include the Indian knowledge system, Indian knowledge into the education, the students' diversity, inclusive educations, multilingualistic education, skill into the education, and now as it is an information and communication age, that we need to include the information communication technology. So in order to improve the performance of the student, what is required? That is very important, because you know that a combination of many things that needs to be required for the growth and success of the students. For example, we need to improve the technical teaching skills and technological skills also. The subject matter skills. She was rightly talking that this Swati Joshi ma'am. We need to also include the people's skill, as well as the interpersonal skill and the behavioral skills, as well as commercial and the legal skills also. And the most important part, that the skills of learning, unlearning, and relearning. That is very, very important part, what she highlighted. We have tried our level best to invite the experts from the Pan India to interact with you, to share their views with you, and to have an opportunity, all of you, to interact with them. Ultimately, what we have to be, we have to have a commitment to the students, society, and excellence. And we should recognize the basic human values to become a good teacher. So when we want to become a good teacher, we should have all the should be able to include all the aspects which has been mentioned to the national education policy, including the core aspects, the core themes, as well as the regional skills, regional languages, the content into regional languages, validation of the content. So this is an ongoing process, and I am happy that as we have started some 2 years back, but in many of the universities, the curriculum has been changed. It has been modified. The outcome-based curriculum has been framed, and what it has been expected in the national education policy, all teachers are trying to include them as and when it is possible, and region-wise it has been included in the curriculum. So, as you know that the success of the course, that all the way depends upon how you participate in this the course, and how you interact with your experts. So I'm happy that you all participants have taken it in the right spirit and taken this course very seriously, and tried to interact with every resource person in depth. So with this, I conclude by wishing you a happy Diwali. And as it has been rightly pointed by Sanap sir, that we have to light the lamp by including innovation in education, innovation into the curriculum, which will certainly light
our lamp forever in the crown of the country. Thank you very much. Thank you, sir. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, my special thanks to Bhise ma'am. Also, my thanks to Professor Dr. Gajanan Sanap sir, Honorable Management Council member of our university, for sparing his valuable time and concluding this course through his valedictory address. Also, my special thanks to our respected President, Professor Satish Patil sir, for sparing his valuable time and presiding over this valedictory function. With the permission of our chair, I declare that this valedictory function is over. And before concluding, I would request all the persons who have joined this cloud meeting to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Thanks a lot. I would now request Amol to stop this.